So very good afternoon to one and all the participants of this NEP orientation and sensitization course. Today we have with us today Dr. Rajesh Jawlekar sir, who is working as a director of Incubation Center of KBC North Maharashtra University, Jalgaon. A person with a vast experience in the field of industry, is an alumni of our university and also a regular resource person for this UGC-MMTTC. So on behalf of this entire group of this 25th NEP Orientation and Sensitization course, I welcome Dr. Rajesh Jawlekar sir. He will deliver a talk on skill development and some latest update related to NEP skill development and circulars and GRs related to Government of India. So I welcome you, sir, on behalf of this entire group, and would now hand over the session to you, sir. Over to you, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. So, well, a very good afternoon to all the participants. And as Rafi sir has said, so today we are going to discuss about skill development. Because as we all know that the basics, what are the major changes which have happened in NEP 2020? The major changes are what? That the skill component, because how do we increase the employability of the graduates? So that has been the main focus of the education. So, and in that context only, internships has been introduced. See, earlier internships was there, but it was mainly for MBA students or mainly for the engineering students or ITI, that typically apprentice and other things were there. But now what has happened of late under NEP 2020, all courses, when I'm saying all, that means your BA languages, your BA humanities, any of the subject, sorry, or commerce subjects, or for that matter, even your BSc, science, physics, whatever, chemistry, environmental science, each and every subject is now having internship as a mandatory component. So today, basically, my main focus will be on the subject internships and how do we implement it. Because you must have seen, I don't know, few of you must have also seen, I'll be also sharing with you the government resolutions and the guidelines which had come. So it has been almost, if I'm not mistaken, 90 plus pages. Right from how to implement. And in KBC NMU, we have been implementing internship for the now this will be the second year. Last year we have already implemented. We have entered an MOU with different organizations, and I'm happy to state that, we were one of the leading universities in the state of Maharashtra, which we could successfully implement internships. So basically my today's talk will be more on the experiential learning and on what we did. Typically I'll say 3W1H. When I'm saying 3W1H means what we have done, how we have done. 1W is for what. Second is how we have done, H. And when we have implemented this and who were the people who are stakeholders who were involved in this. So this I'll be sharing. And then one more thing which I intend, what Rafi sir was just now saying, there are certain latest updates also have come. Now going further, as recent as on the 22nd of April, 2025, this is just about a month ago, there is a GR which has been released on AEDP. That is Apprentice Embedded Degree Program. So if time permits, I'm not very sure, how much time, if time permits, I will also touch upon those areas, but we need to have a separate session for that. See, because AEDP is one subject which will Apprentice Embedded Degree Program may not be applicable to all the participants who are present over here. Because what will be applicable is the internship component,
बिकॉज इंटर्नशिप आप चाहे जो कोर्स चला रहे हो, जो प्रोग्राम यानी डिग्री प्रोग्राम आपके इंस्टीट्यूट में हो रहा है या आपके कॉलेजेस में हो रहा है, तो उन सभी के लिए आपको इंटर्नशिप जरूरी हो गई है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस रहेगा इंटर्नशिप्स के ऊपर। So let's make a beginning. I'll be sharing a few of the things over here. One second, just let me open my. Hmm? Um, you can just prompt and on the when I display, so you can tell me whether it is visible or not visible. One second, just hold on. Sharing the screen. Yes, sir, it is visible. Yeah, yeah. I'm just sharing. You can just share the PPT. Yeah, thank you. So these are some of the GRs which were released. So what I will do is I will share this GR because I will not be discussing I'll be what we have done, how we have implemented the GR. That will be my crux. But nevertheless, because some of you may have not gone through the GR, so what I will be doing is I'll be sharing these GRs. So this GR is maybe somewhere way back in May. One second, just trying to. This, if you see, 16th of May 2023. Rafi sir, it is visible, this GR, it is readable. नो सर। हाँ सर नहीं दिख रहा है आपको No, क्या? no. नहीं नहीं दिख रहा है। ओके वन सेकेंड, जस्ट होल्ड करो, आई हैव टू रीस्टार्ट। देखिए दिख रहा है। यस सर। तो जैसा मैंने बताया कि ये 16 मई 2023 का जीआर है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी अपना कुछ गाइडलाइंस उन्होंने इशू किए हैं कि एनईपी इम्प्लीमेंट करते टाइम आपको क्या क्या ये करना है इसके अंदर, यानी क्रेडिट स्ट्रक्चर ये वो कैसे रहने वाला है उसके बारे में है। अभी दूसरे कुछ जीआर भी है, एक मिनट। ये यूजीसी का दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है सर। हाँ, ये यूजीसी के गाइडलाइंस है इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप कैसे करने चाहिए, हाउ द इंटर्नशिप हैज टू बी डन। These guidelines were received in 2023, if you can see here. यानी 2 years before these guidelines were issued. Or if you run through, because it's a big document, if you run through it is, I think, close to almost maybe 50 plus pages. So I will be sharing these guidelines also.
So this is one guideline. Then फिर एक इंटर्नशिप पॉलिसी भी आई है डिपार्टमेंट की तरफ से. इज द पॉलिसी विजिबल? कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? Yes. हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से. Yes, sir. हाँ, तो ये गाइडलाइन भी आई है. तो दिस इज अगेन दिस वाज डन वे बैक इन आई थिंक 23-24 में आई है ये. एंड इफ यू सी हियर, इसके अंदर कई सारे उन्होंने बैकग्राउंड ये वो किस तरह से करना है. So this is again running into several pages. It's almost 27-30 pages. तो ये गाइडलाइन आई है. Then again, ये 29 फरवरी 2024 को एक जीआर आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. वो भी अगेन इसके ऊपर था कि इंटर्नशिप कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, गाइडलाइंस. इसके अंदर भी उन्होंने गाइडलाइन दिए. ये सेम बुक करीब, ये भी मेरे ख्याल से इफ यू सी हियर, इट इज 94 पेजेस. कितने पेजेस? 94. अभी यू ऑल नो दैट मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस इज, हम लोगों ने क्या किया यूनिवर्सिटी में, हम लोगों ने किया ये कि इसके पूरे जितने भी गाइडलाइंस आए हैं, जैसे राइट फ्रॉम 23 यूजीसी गाइडलाइन, ये अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, और जो आखिरी का जो गाइडलाइन आया था 29 फरवरी, बिकॉज वो डेट इसलिए मेरे को याद है बिकॉज दैट वाज 29th ऑफ, इट वाज द लीप ईयर, 29th ऑफ फरवरी 2024. तो उसमें भी गाइडलाइन जो आई, तो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 94 ऑड पेजेस. और इस गाइडलाइन को पूरा पढ़ने के बाद देन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड. क्या होता है कि whenever we do, see like for example when we say that what are the basic things, क्योंकि ये गाइडलाइन में these guidelines also had certain things like आपने लेटर कैसे लिखना चाहिए, आपने शेड्यूल कैसे कहने का मतलब इंडस्ट्री को लेटर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में ये वो किया था. बट हमने क्या फोकस किया उसके ऊपर कि क्या मस्ट है इंटर्नशिप करने के लिए, व्हाट आर द मस्ट थिंग्स. And all those must things, you won't believe, we have documented in one page. We have just tried to, document in one page. I'm not saying it is very exhaustive. It is a comprehensive document. So today my focus will be more on the experiential learning. कि हमने किस तरह से इसको ये किया. First thing what we did is, after reading all the guidelines, and second thing, what was benefit to me was, I have worked in industry for almost 28 years. My last assignment was with Endurance Technologies Limited. And that time also, for the last 10-15 years also, although we were working in industry, we were frequently interacting with, the university. And that is how, like I used to come for this faculty development program also when I was there in the industry. So after working in industry, having an industrial experience of close to 28 years, that helped me to consolidate all the guidelines, all the different circulars which had come from the government. And what I did is that we tried to comprehend it and make it a very means a very short document. We all know, if I will share all these GR with you, but I can guarantee you that the total participants who are attending this program, hardly very few will go through each and every page of this 94-page document, because it is a human tendency. Even for me also, it becomes very difficult to open, to read it again and again. So what happens is, many a times क्या हो जाता है कि then because we have lot of we are wearing multiple hats. Like for example, I am working as a director innovation incubation linkages, but I am also taking care of OGT, internships, and then we are also taking care of CMKCY, Mukhyamantri scheme. Then you're also taking care of your own center, that is Center for Innovation. You're also taking care of PhD. You're also taking care of apprentice embedded degree program, like, facilitation. So, and you're also taking care of international students.
admission. What I'm trying to tell you that like I am wearing a multiple hat, I'm sure many of you will also be having different multiple hats. Like, you may be a department head, but then you need to work on several other projects also. So what happens in this process, many a times the things get diluted. And when we see a document which is of 94, 95 pages, तो आदि शक्ति तो उधर ही खत्म हो जाती है यार कि इसको पढ़ के हम लोग कैसे तो to avoid that phobia, what we did is we have comprehended the document in such a way that we have tried to include what is must. भाई ये तो करना जरूरी है. जैसे आदमी को जीने के लिए बेसिक चीज है, 2 वक्त का खाना या एक टाइम का कम से कम खाना उसको मिलना चाहिए. और व्हेन आई एम सेइंग खाना मींस इट इज नॉट पिज्जाज एंड बर्गर्स, बट बेसिक फूड वी नीड टू हैव. So what is that basic things in internship we need to accommodate? So that we focused. So now I will be opening that document. We have also, I will also share that policy. See, KBC NMU Jalgaon, what we did, we created our own policy using all the documents that we had received from the central and the state government, using all the directives that we had received. And that was that time, that internship, let me clarify over here, that internship was mainly for the PG students, postgraduate students. Because उस time पे, like, last 2 years before, we had already, when I'm saying we means university. The university had already implemented the policy of, had accepted NEP guidelines and had implemented the framework NEP 2020 for our PG program. And in the PG, as I said, the internship was an important component. Now this year, I think for next year onwards, we'll be having, most of the colleges will be having for the UG also. So the guidelines will be same for UG and PG, because basically it's only the question of semester, in which semester you're going to locate. I think if I'm not mistaken, it is in the 8th semester in the 6th semester of the UG students. So I'll take you to the guidelines. You can just buzz me, and in the meanwhile, before I move ahead, once again. I am attaching before I actually forget, what I'll do is I'll attach the GRs and everything so that we don't miss on that. What I've done is I have attached all the GR, the documents, that is just for the government resolution, UGC guidelines, Maharashtra government ke GRs and all that. Now, you can, whenever you have time, that is just for your reference. Now, let us come to our यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस. हमने किस तरह से इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया एकदम. So,
my question to all of you, is my screen visible? The guidelines for internship OGT project work for PG program under NEP 2020. University के guideline. Yes, sir. Visible, no? So if you see here, this entire document, I'll just quickly scroll through. ये only एक पेज का document है. कितने पेज का? One page. It is an SOP of one page that we have prepared. Of course, it is supported by almost 5 to 6 annexures. वो annexure में मैं आपको बताऊंगा जैसे A, B, C, D, E. करीब ये 5 annexures है उसको लगे वाले. So I will go through that annexures also, but I would take you through the entire guidelines. And what I would request you is आपके मन में कोई भी अगर सवाल है तो please ask me at the end of the session, or you can also put it in the chat box. So here, basically what we have done is, like if you see here, guidelines for internship, OGT, project work for PG program under NEP 2020. Like what I've said, that last year, the program was mainly for PG students only. And that is why we have said that these guidelines are our, but believe me, this PG and UG, it is going to be the same, the guidelines per se. So what we said, if you see here in the objective, we have said they were to provide, the objective is to provide guidelines to the affiliated colleges and on-campus schools. KBC NMU has total 13 schools on campus and one institute. AICT का एक institute है और हमारे 13 schools यहाँ पे है. So these guidelines were for PG, as I said, NEP 2020 के अंतर्गत. These guidelines, what we have done is we have categorized into basic 3 categories. 3 categories यानी क्या किया उसको गाइडलाइन को एक फोकस किया उसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस क्या करनी चाहिए. व्हेन आई एम सेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यानी बेसिकली कॉलेज स्कूल मेंटर इन लोगों ने क्या करना चाहिए. सेकंड इज ऑन द फॉर द स्टूडेंट लोगों ने क्या करना चाहिए. एंड थर्ड वाज फॉर द internship evaluation, because ultimately doing good is not enough, but you should be able to evaluate it also. So evaluation किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस इसके अंदर कवर किया है ये गाइडलाइन में SOP में. Now let's look at these guidelines. If you see these guidelines here, these are the guidelines for HEI and on-campus schools. The HEI campus school will establish a training and placement cell. अभी हमने इस साल इसको नाम चेंज कर दिया बिकॉज दैट टाइम वी वर वेरी इन द नेसेंट स्टेज. सो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बोला था, बट नाउ वी हैव एन INO, internship cell, and we call it, instead of TPO, we are calling it as an INO, that is internship nodal officer. So we have said that okay, training and placement cell, then training and placement officer will be there reporting to the head of the HEI or the director of the school. The TPO will be supported by assistant coordinator from each stream. When I'm saying assistant coordinator, that means the person who is designated, as I said, we have 13 schools in the campus. या फिर अगर हम लोग कोई कॉलेज की बात करें तो कॉलेज लेवल पे देयर कुड बी वन INO, दैट इज इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर. टिपिकली जो TPO जो होता है, like the training and placement officer, can act as an internship nodal officer also. So let us take an example at a college level, affiliated college. So affiliated college में क्या होगा? So this person will be the head of the INO or the TPO. Now, if a college has like arts, science, and commerce, there are 3 different streams. Many of the colleges are arts, science, commerce. Some colleges there is also, other humanities.
different courses, different degree programs are running. Now, one INO or one training and placement officer cannot, practically it becomes very difficult for him to understand, to arrange for the internship arrangements. So he is supported by, when I'm saying assistant coordinators, means assistant coordinators from each stream. The central INO or the TPO will, like for example, from commerce में से एक या दो फैकल्टी उसको सपोर्ट करेंगे, आर्ट्स में से कि जो आर्ट्स के जो एचओडी है उनकी तरफ से कोई उनको एक फैकल्टी उसको सपोर्ट करेगा सेंट्रल इसको उसी एंड फर्दर उन असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर दोज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स देयर विल बी टू स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स. When I'm saying student coordinators means within the students we'll have to identify two students who will be assisting the assistant coordinators for smooth implementation of this internship. The TPC, the training and placement coordinator, shall ensure that the internship project work opportunities are made available to the students. तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी क्या रहेगी कि मैक्सिमम ये किया जाए क्या अपना MOUs, industry, establishment. By the way, I would like to tell you one more thing because I am also on the state level OJT committee. Let us now stop using the word industry. My appeal to all the faculty members over here. See, this has been discussed at the state level committee also, wherein I am also one of the members in one of the subgroups on the OJT. Let us not use the word industry. क्योंकि क्या हो जाता है कि जब हम इंटर्नशिप बोलते हैं तो इंटर्नशिप बोलने के बाद क्या हो जाता है कि स्वाभाविक है इंडस्ट्री का शब्द आता है. Instead of industry, we should use the word establishment. Because establishment जब आप बोलोगे तो establishment में इंडस्ट्री भी आती है और लोकल गवर्नमेंट भी आते हैं. Like for example, if you are at a taluka place, I'll just give some practical examples to you. You are at a taluka place and let us say there is a tehsil office over there. So the tehsil office becomes the establishment. Or there is a bank over there. A bank becomes an establishment. Because आप इंडस्ट्री करोगे तो तालुका के जो कॉलेजेस है वो बोलेंगे हम लोग इंडस्ट्री में कहाँ से भेजेंगे भाई. तो because see, what is the purpose of this internship? The purpose of the internship is to increase the employability of the student through basically critical thinking, communication skills, analytical ability. यानी उसकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी इंप्रूव होना चाहिए, उसको टीम वर्क में काम करना, हाउ डज ही वर्क इन अ टीम, हाउ डज ही कम्युनिकेट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन. यानी ये सब चीजों को उसको अवगत कराना, उसको एक्सपोज करना, उसका स्किल उस एरिया में बढ़ाना, यही इंटर्नशिप का मूलभूत यानी बेसिक एक्सपेक्टेशंस है जिससे कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव होगी. बिकॉज यू मस्ट हैव सीन if you go through even if you Google or if you go through the newspapers, you will find that many a times the institute, the student employability is very, very less. If I talk of engineering colleges, it is said around 20% of the students are only employable. Because with so many engineering colleges and with no practical exposure, many times the students are not able to meet the industry standards. Let me share with you my practical example. When I was working in industry, I was based in Sambhajinagar, Aurangabad.
we had our headquarters over there. Our company group turnover at that point of time, 2 years before, when I was working over there in Endurance Technologies Limited, our group turnover was 8,000 crores. 8,000 crore का उसका turnover था. And we had employees, close to 4,000 employees, around spread in 28 plants. Now, my managing director used to always put a pressure on us, get me best of the students. Getting people to work in, because see, Aurangabad itself has, because see, most of the cream crowd, as you all know, goes to metros like Bangalore, Pune, Bombay, Gurgaon, Delhi. These are the metro places where you will find most of the talent pool which is there. But in the peripheral areas like Aurangabad, Jalgaon, or these areas where the companies, the business are running, it is very challenging for them to get the students. Let me share with you today also when I am in Jalgaon, I see many of the talented students, they will try and move to the city areas. When I'm saying metro areas means, again, moving towards Bombay, Pune, Bangalore. Local, let me share with you when we are approaching, when we are meeting the industry people, they are saying, sir, please give us working hands. आपके बच्चों को तैयार करके भेजो. And as we all know, it is challenging for all of us as a faculty. We all know how the attendance, especially after COVID times, has reduced. And this is becoming more and more challenging because the attendance has reduced. So that is also impacting the attitude of the students. Many times they'll take it in a very casual way and their development will not happen. Because what happens is student nowadays, many a time they feel that क्लासरूम में जो पढ़ा जाता है वो तो अपने गूगल पे अवेलेबल है. But they don't understand that the wisdom, like for example, if I just share this policy with you without talking to you, probably you will not get the essence of it. But what I'm trying to do is I'm trying to explain to you each and every, you should know the essence of it. The essence is understood only when this such kind of faculty development programs happen. Merely circulating the policy does not help. And the same happens with the students. If they don't attend the classroom sessions, if they don't do the internships in a proper way, it is not only going to affect the student, but let me share with you, it is also going to affect the institute or the university. Because कल अगर हमारे लड़के अगर इंडस्ट्री में जाएंगे इंटर्नशिप करने और वहां पे अगर कुछ उन्होंने ठीक से डिसिप्लिन नहीं का पालन नहीं किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं पाला, है ना. व्हेन आई एम सेइंग ड्रेस कोड, आई एम नॉट सेइंग बहुत अच्छे ये, पर बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स अगर उन्होंने उसका पालन नहीं किया तो क्या होगा. They will say, they will not say the student is bad. They will of course say the student is bad, but they will say university क्या करती है, institute क्या करती है, किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं. देन फिर क्या हो जाता है, वो ब्लेम जो है वो ब्लेम स्टूडेंट के ऊपर नहीं, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर आता है, और इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं तो अल्टीमेटली वो यूनिवर्सिटी के ऊपर आता है. So it is our moral responsibility as teachers, trainers, mentors that we need to orient, I'm using the word, orient the students before they go for the internship program. It is very important because it is not only affecting the student, it is not only for just for the sake of his marks, but it is also going to affect the brand image of the institute and the year. वो चाहे भले ही वो तहसील ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए जाएगा बच्चा, लड़का या लड़की, बट वो तहसीलदार को भी लगना चाहिए कि यार ये बच्चे, बिकॉज सी टुडे वी ऑल आर वर्किंग अंडर स्कैरसिटी.
Our university has, I think, if I'm not mistaken, 250 odd positions which are approved as teachers, but we are today working on 60. To give you the precise number, we are not more than 65 or 66 total in the university. And I am sure similar situation is there in the colleges also. And similar situation, let me share with you, is there in the government sector also. Recently, I met the collector of Jalgaon about 15-20 days ago, because we are planning one apprentice embedded degree program. हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस साल से, जिसका नाम है अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम. इट्स अ 3-year program which has 1 year of apprenticeship. एंड उस प्रोग्राम का टाइटल है बीए ह्यूमैनिटीज सिविल सर्विसेज. यानी सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग प्रिपेयर करने के लिए वो एक बीए का प्रोग्राम हम लोग शुरू करने वाले. तो उस संदर्भ में यानी 1 year of apprenticeship. So we thought that we will talk to all the 3 collectors of Dhule, Jalgaon and Nandurbar and we'll request them कि सर हमारे जो ये 25-30 बच्चे या स्टूडेंट जो भी इनरोल होंगे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे 30 स्टूडेंट्स, उन 30 स्टूडेंट्स को आप आपके इस्टेब्लिशमेंट, नाउ द वर्ड कम्स इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कलेक्टर ऑफिस में आप उनको या आपके जो सहयोगी ऑफिसेज है, अलग अलग जो आपके सब सेंटर्स है, वहां पे आप उनको अप्रेंटिस के लिए अपॉर्चुनिटी दीजिए. बिलीव मी, because we thought that we will distribute these 30 students in the 3 districts. Sri Ayush Prasad ji, who is the IS collector of Jalgaon, he said, sir, please don't worry. Send all 30 to me. If you have 40 admission also, you please send all to me. And he immediately instructed his, his subordinates that we need to enroll for this. Means we will support the university for this initiative. Because he is going to get a manpower of around 30 to 40 people to work with him. So these are the challenges. What I'm trying to tell you that if you go to the Tahsildar and if you tell him, but of course, the challenge is that the बच्चों ने भी उसी तरह से उसका behavior और उसका attitude वैसा उस तरह से demonstrate करना चाहिए. And basic things, let me share with you, they don't expect, nobody, when I was in the industry, that time also when I used to talk to the students, we didn't expect much of the big things from the students. क्या हो जाता है, जो मुंडेन वर्क होता है, जिस काम के लिए हम लोग कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चों के माध्यम से, ये प्रोजेक्ट समर ट्रेनीज के माध्यम से हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. So the company, the establishment which is recruiting your people for internships, they don't expect too much from the internship. But basic things what they expect is the student should be disciplined, should be good in communication. At least he should be able to communicate. He should be able to write a few things. He should be able to understand basic things. एक्सेल स्किल्स, वर्ड स्किल्स उसको आना चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस उसको आना चाहिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स which is expected by any of the yeah. Tomorrow when you will go and talk to the Tahsildar or when you will go and talk to one of the the local bodies over there, the Zilla Parishads or whatever, and if you talk to the direct cadre class 1 officers, they will say okay, please send them, because कई बार उनको भी सर्वेस कराने होते हैं, उनको कई बार कुछ रिपोर्ट्स लिखने होते हैं. तो एटलीस्ट फर्स्ट कट, फर्स्ट ड्राफ्ट ये स्टूडेंट के माध्यम से वो बना सकते हैं और वो स्टूडेंट को भी. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. कई बार क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स को ये सब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है
और स्टूडेंट को मैं जब इंडस्ट्री में था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन विद एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सेवरल अदर कंपनीज, ऑलमोस्ट आई हैव चेंज्ड 4 5 कंपनीज. When I was working over there, I used to see many a times the students, we used to tell him that, okay, this is what is expected out of you. Any questions you have, we used to ask the student, any questions you have? And you know what was the answer most of the students used to say? Sir, मुझे स्टाइपेंड कितना मिलेगा? Now this becomes a, I'm not saying companies do pay stipend, but some companies don't. And when the companies are like, when I'm sitting at as a HR manager, when I'm sitting as a HR manager, when I'm trying to accommodate 2 or 3 or maybe 4 5 students, and when the student is asking me, sir, मुझे stipend क्या मिलेगा? I am not impressed. Because I, as a manager, I am expecting that the student will ask me, कि sir, what are the things that I am going to get to learn? आप मेरे को कौन से डिपार्टमेंट में डालने वाले? सर, मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में डालिए, 1 महीना मेरे को काम दीजिए कि मेरे को सीखना है. But unfortunately, many a times we find very, very few students are there who are actually inclined towards learning. So it is our responsibility to to orient them that this is what they should be looking at. They should be looking at more of the learning opportunity. So the training and placement coordinator will look at, like, we will explore. जैसे अभी कोई तालुका लेवल पे अगर है कॉलेज, तो उसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर शुड लुक इन एंड अराउंड. ग्रामपंचायत आहेत का तिथे जवळपास? ग्रामपंचायत असतील, दुकानं असतील. मी तुम्हाला आयडियाज देतोय. व्हेन आय एम सेइंग दुकानं म्हणजे, हे बघा, कोणत्याही खेड्यातल्या खेड्यात गावात जा तुम्ही, तुम्हाला तिथे दुकानदार असतील, रिटेलर्स. आणि I will share one more experience with you, that there is an association which is called as CAIT. उस एसोसिएशन का नाम है, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स. ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, महाराष्ट्र में करीब उनके 10 लाख प्लस, 10 लाख से भी ज्यादा उनके मेंबर्स हैं. और ये जो एसोसिएशन है, ये है व्यापारियों का एसोसिएशन. व्यापारी जे व्यापार करणारे लोक आहेत, तर त्यांचं संघटना आहे. त्याचं हेडक्वार्टर दिल्लीला आहे. उस एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने, केबीसी एनएमयू जलगांव ने उस एसोसिएशन के साथ एक एमओयू किया. उस एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बोला कि सर, प्लीज हमारे पास बच्चों को भेजिए, हम चाहते हैं वो 1 महीना आए, 2 महीना आए, पार्ट टाइम भी भेजिए. क्योंकि हमें हमें बड़ी दिक्कत होती है. उनको दिक्कत क्या होती है? बिकॉज वो बोले हमारे को वर्किंग हैंड्स चाहिए. आता तो मुलगा, जर बीकॉम झालेला मुलगा, बीकॉम जिसका बीकॉम पढ़ रहा है, वो अगर जाके कोई ट्रेडर्स के पास काम करेगा, यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, दुकानदार, कोई बड़ी दुकानदार के पास जाके काम करेगा, और वो दुकानदार जब उसको बोलेगा कि जा बेटा, ये बैंक में जा, ये चलन भर के आओ, जाओ बेटा, ये जीएसटी का ऑफिस में जाओ, उसका जीएसटी का कंप्लायंस यानी चलन भर के आओ, या फिर टैली के ऊपर काम करेगा, कस्टमर के साथ बात करेगा, तो क्या होगा? उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका थिंकिंग, उसका मार्केटिंग स्किल्स, ये सब उसके अंदर बदलाव होने वाला है. और यही हमारा उद्देश्य है इसका इंटर्नशिप का. तो वी हैव मेड अ
MOU with this Confederation of All India Traders, and they requested, they appealed. Abhi Jalgaon itself is having around not more than 10,000, I'm saying. जलगांव धुलिया और नंदुरबार मिला के CAIT के कम से कम 10,000 के ऊपर मेंबर्स है। इस CAIT के साथ हम लोगों ने क्या किया, MOU साइन किया। I'll be sharing that MOU also. I'll show that MOU also with you. What I'm trying to tell you, opportunities are many. आप सिर्फ क्या करना है कि इंडस्ट्री, ये शब्द ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, कई बार हम लोग बात करते हैं अप्रेंटिस अप्रेंटिस अप्रेंटिस, तो हमें क्या होता है कि वो इंडस्ट्री 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 का एक ओरिएंटेशन होता है, बट इंडस्ट्री नहीं, हम लोग इस्टेब्लिशमेंट शब्द यूज करेंगे। सो इज दिस विजिबल टू यू? हाँ सर, विजिबल है, विजिबल है। अगर एक्चुअली आप लोग पार्टिसिपेंट देखो, म्यूटेड है सर, पार्टिसिपेंट म्यूटेड है, ठीक क्लास है, डिस्टर्ब नहीं होना बोलकर। correct, correct. So any of the part, any one of your Rafi sir, हाँ even if you are busy in some other work, हाँ but any of your subordinate can also just prompt to me, because ये what's happening is when I'm opening my files ना, हाँ हाँ, मेरे को वो इसका स्क्रीन नहीं आता है अपना ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मैं जो, तो अभी हूँ सर, बैठे हुए हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम, करिए आप कंटिन्यू सर। and I think just a feedback, are we going in the right pace and the यस यस right सर, यस direction, the essence of it? यस यस Because the understanding the essence is important. Otherwise क्या हो जाता है, वो वन पेज का पॉलिसी में दे दूंगा और फिर वो उसका ये नहीं होगा। यस So सर। if you, हाँ, so if you see this banner, I appeal to all the participants. If you see this banner, this talks about academia and traders collaboration. This collaboration, I would draw your attention to the date. इस डेट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये हमने किया है 17 मार्च 2023, यानी आज 24-25, 2 साल के ऊपर उसको हो गए। अगर आप देखोगे, पुखराज पगारिया जी हमारे जो आपके औरंगाबाद में ऑलरेडी वो मारुति के शोरूम के में लीडिंग रिटेलर थे, उन्होंने खुद आए थे, एंड देन उनके ये भी आए थे। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू, दैट लुक एट द एस्टेब्लिशमेंट, लुक एट द नेवरदलेस उसका जो ये हुआ था, हमारा जो MOU जो ड्राफ्ट हुआ था, वो भी मैं आपको 1-2 मिनट में आपको मैं बताता हूँ। एंड इफ यू आस्क राफी सर, यस सर। what we will do, all these documents now, I don't mind sharing also, but I यस will share it with you, यस यस because no lunch should be free. यस, When I'm saying free means लोगों ने उसको पूछना चाहिए, डिमांड करना चाहिए। जी सर, जी नहीं तो क्या होता है, हम लोग मुफ्त में बांट देते हैं, तो फिर मुफ्त में जी वो तो वो लोग रीड नहीं करते। फिर जी जी जो सही में इंटरेस्टेड है उनको ये होना चाहिए, जी जी। बिकॉज हम लोग पूरा ठीक है सर। तो विजिबल है सर ये MOU? जी सर। ओके, अगर आप ये देखोगे तो ये MOU जो हुआ है वो 17 मार्च 2023 को ये MOU बिटवीन कवित्री बहनाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बीच में हुआ है। आई डायरेक्टली टेक यू टू द ऑब्जेक्टिव्स। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CIT यहाँ पे लिखा है, इंकरेज लोकल ट्रेड एसोसिएशन थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ KBC NMU। So what I'm trying to show all of you
if you see this, this is signed by everyone. So what I'm trying to tell you is that this effort we have done almost more than 2 years ago. So coming back, we should focus on establishment. अभी ये टीपीओ क्या करेगा? टीपीओ ये करेगा, उसकी आंख खुली रख के, अभी मैं आपको फैकल्टी मेंबर्स को बोलता हूँ, प्लीज टीपीओ के ऊपर मत पूरा छोड़ दीजिए. टीपीओ हैज टू आल्सो बी सपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल एंड द अदर फैकल्टी मेंबर्स आल्सो. बिकॉज देखो, हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक बहुत ही, वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. We are doing a very, very noble work. Like doctor's work is also a very noble work because doctor treats the patient. उसी तरह से हम लोग, हमारा भी एक नोबल काम है. We should have the pride in the job because we are creating the future of India. Let us make sincere attempts from our side. So the project work, he will also explore, like he will look into local industries. इसमें दिया है, देखो, लोकल इंडस्ट्री, बिजनेस फर्म्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी एस्टैब्लिशमेंट्स, बैंक्स एक्सेट्रा, एमओयू के लिए ये करना है. एंड ही विल बी मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म डेटाबेस ऑफ ऑल द, ये अभी इसमें यूनिफॉर्म, व्हेन आई एम सेइंग यूनिफॉर्म डेटाबेस मींस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट एनेक्जर्स. This is annexure A, wherein we collate all the information of the students. I will show you as we go on. Once we finish going through the A, I will show you all the annexures and I will also share these things with you. Because the purpose is not only to keep it up to KBC NMU, but also to spread whatever good things are there. We should share with each other and benchmark and try to improve. So the database will be maintained as per the annexure A, and it will be done by the respective internship supervisor from the firm or the and mentor. Internship supervisor ka role, internship supervisor is a person who is from the establishment, and the mentor is from the institute or the HEI. Preparing a, maintain a list of potential recruiters and the past recruiters and their contact details. सो बेसिकली क्या हो जाता है कि कई बार अभी हम लोग इवेंट्स करते हैं कॉलेज में, यानी प्लेसमेंट का इवेंट्स करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स. तो उस इवेंट में जो जो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं, तो उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. उनका डेटाबेस हमने मेंटेन करना है. हमारे इर्द गिर्द जो इस्टेब्लिशमेंट है, एनजीओज है कुछ. और भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एकदम ही रिमोट विलेज है, मान लो, I'm talking about, let us say, somewhere in Yaval Taluka or somewhere in Gadchiroli, एक रिमोट हेमलकसा या भामरागढ़ में कोई एक कॉलेज है. अभी उस कॉलेज में भाई कोर्स तो यही है, ग्रेजुएशन, और गाइडलाइन तो सभी के लिए सेम है, एनईपी 2020. तो हम लोग किस तरह से करेंगे वहां पे? वहां पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बहुत कम है. तो इसके लिए और एक इनिशिएटिव है सर, वो इनिशिएटिव है उन्नत महाराष्ट्र अभियान. मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप बना लीजिए. मैं आपको सबके कांटेक्ट डिटेल्स भी दूंगा. उन्नत महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत, उन्नत महाराष्ट्र अभियान ये एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसकी नोडल एजेंसी जो है वो आईआईटी मुंबई है. आईआईटी मुंबई के माध्यम से ये उन्नत महाराष्ट्र अभियान का इनिशिएटिव चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विद्यार्थी, यानी कहाँ के भी विद्यार्थी अगर होंगे, तो उन विद्यार्थियों को एक स्पेशल लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है. इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं
अगर कोई आदिवासी एरिया है, रिमोट एरिया है गढ़चिरौली का, तो स्टडी और ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, बीए कर रहा है, स्टडी ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ डैश एरिया, ट्राइबल एरिया, उस तरह से भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। या फिर द पोटेंशियल ऑफ herbs and shrubs available, the local flora and fauna which is there, or the assessment of the existing skills, education, यानी अलग अलग टॉपिक्स आप इसके ऊपर करके लड़कों को उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये ऑफिशियली अलाउड है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ही इनिशिएटिव है, और हमने उसके तहत उसका पूरा पूरा उपयोग हमने हमारे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो ये देखना है कि हमारे रिक्रूटर्स कौन है। फिर बाद में क्रेडिट कैलकुलेशन हमने यहाँ पे ये किया कि क्रेडिट कैलकुलेशन विल बी 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 45 आवर्स। बट अभी इसके अंदर काफी सारा डिबेट हुआ रिसेंटली। अभी आप सभी लोगों को शायद आने वाले अगले में भी 1 महीने के अंदर आप सभी लोगों को कुछ गाइडलाइंस आने वाली है सेंट्रल ओजीटी कमेटी की तरफ से, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप की कमेटी जो है, जिसके सब कमेटी का मैं मेंबर हूँ। अभी रिसेंटली उसका एक मीटिंग हुआ नासिक में, एक 10 दिन पहले। तो उस कमेटी में वो कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फ्रीज किए हैं उन्होंने, और वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस सभी सर्कुलेट होंगे वंस अप्रूवल होने के बाद सुकानू समिति में, और वो गाइडलाइंस आपकी तरफ आएंगे। उस गाइडलाइन में मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे शायद वो 1 क्रेडिट का उल्लेख हम लोग 30 आवर्स, बिकॉज वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल अगर क्लासरूम अगर है तो 15 आवर्स होता है, प्रैक्टिकल अगर है तो 30 आवर्स होता है, और फील्ड वर्क अगर है तो 45 आवर्स कंसिडर किया जाता है 1 क्रेडिट के लिए। ये मैं समझता हूँ कि दिस मस्ट बी द स्टैंडर्ड थिंग विच मस्ट बी अक्रॉस द डिफरेंट HEIs। तो हमने 45 आवर्स उस टाइम पे कंसिडर किया था, बट वो 30 आवर्स का भी शायद वो सर्कुलर आपको आएगा। उसका लॉजिक ये है, जैसे मैंने बताया, इट इज कंसिडर्ड एज अ फील्ड वर्क। डिसिप्लिनरी इश्यू इफ एनी, आपको लड़कों को सिर्फ छोड़ के चलेगा नहीं, आपको उसको टाइमली फीडबॅक भी लेना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग टाइमली फीडबॅक इन द सेन्स, वेळोवेळी जाऊन तिथे की हाउ द ट्रेनिंग इज हॅपनिंग, हाउ द वेदर द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड और नॉट, और अगर कुछ डिसिप्लिनरी इशू अगर आता है तो क्विक उसके ऊपर अटेंशन करके क्या करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश वो HEI के डायरेक्टर या हेड ऑफ द HEI यानी प्रिंसिपल ने, उसके अंदर उसका भी रोल आ जाता है। नाउ लुक एट व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स। गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप के लिए वो कहाँ कहाँ पे जाके ये कर सकता है। तो वो स्टूडेंट ने भी क्या करना है कि उसके अलग अलग उसके इर्द गिर्द भी, कि उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो ठीक है उसको वो भी एक्सपोज कर सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट की एक टीम बना सकते हो, स्टूडेंट सेल की एक टीम बना के अलग अलग, यानी कोई स्टूडेंट को कुछ अलग मार्केट में, कुछ स्टूडेंट को इस्टेब्लिशमेंट में भेजो, कोई स्टूडेंट को MIDC में भेजो अगर MIDC है तो, या फिर कोई स्टूडेंट्स को बैंक्स में भेजो। यानी व्हेन आई एम सेइंग बैंक्स में भेजो बोलते, ये सब जगह पे भेज के उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उनको अवगत कराओ, स्टूडेंट को एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन दो कि भाई इंटर्नशिप क्या है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए भेजिए। व्हाट विल हैपन, सो दिस विल क्रिएट एन अवेयरनेस अमॉन्ग्स द द द कम्युनिटी एट लार्ज। बिकॉज क्या हो गया, टिल नाउ when we were doing this 2 years ago, when we started doing this, many of the establishments were not aware because it was the first year of implementation. Now this is the second year of implementation for our PG students. So काम थोड़ा आसान हो गया अभी। तो you should send your students to the different places and let them introduce and collect the data. That data can be coordinated by the
by the training and placement cell, which will be of use to you. स्टूडेंट को दूसरी चीज उनको बोलो फॉर्मल ड्रेस कोड. When I'm saying formal dress code, I'm not saying tie, boot, tie में जाना चाहिए ऐसा. But at least basic कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ironed होने चाहिए, proper hair combing होना चाहिए. What we are trying to say is that they should maintain the decorum of the establishment. These are small things, but it affects. Code of conduct, safety norms. Safety norms are very, very important, especially when you're sending your students in establishments which has manufacturing facility. I don't want to name the companies, but let me share with you the companies that I have worked. I have seen fatal accidents with my own eyes, because there are chances of fatal accidents which can happen on the factory shop floors. So you need to inform the student you need to make him aware. There's a factory shop floor, I cannot enter without safety shoes. Normally the organization where there are available, because when visitors come, they provide safety shoes. So that's one second. This session with you. So the student has to follow the safety norms. Second thing is, please understand, when they are working in any establishment, there is lot of confidential information which is there. Like for example, the confidential information about my companies, I cannot document it. I cannot document it as, this is what I have done in this company and that company. Just now I mentioned to you about a fatal accident. I cannot tell you the name of the company where the fatal accident has happened. It is not correct when I'm talking, or where I cannot write it. What I'm trying to tell you, the student cannot write in their report. So before publishing, they should take the permission of the supervisor, internship supervisor. Because the internship supervisor should permit, the establishment should permit the student to publish such kind of information. The mentor is expected to at least, within 15 days, at least, every alternate 15 days, the mentor should try to, connect with the students over the phone or whatever. So that, he gets a online, means, the accurate feedback, like, what is happening. The report, हमने बोला रिपोर्ट में बेसिक 3W1H होना चाहिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था. What was the internship about? When it was done, यानी from to period. Who were the persons involved? यानी कौन person involved, यानी supervisor, उसके अलग अलग managers या जो भी है, mentors. And how the project was executed, यानी किस तरह से उसने execute किया, and what were the learnings. Faculty members, I would like to tell you what I'm trying to tell you, 3W1H, 4W1H or whatever, 5W1H. These are not my tools. These are Japanese tools which Japanese companies use. If you Google and if you put 3W and 1H, you'll get to know this is a problem solving tool. And this you can use in our day-to-day life. So here we have said, report to कसा लिहिणार आहेस ते आम्हाला काही हे नाही, पण या रिपोर्ट मध्ये या बेसिक गोष्टी आल्या पाहिजे. बेसिक गोष्टी कोणत्या आल्या पाहिजे, त्यांनी काय केलंय, कसं केलंय, केव्हा केलंय, आणि कोणी त्याला कोण कोण लोक त्याच्यात इन्व्हॉल्व होते, म्हणजे व्हॉट, व्हेन, हू अँड हाऊ अँड व्हॉट. डेमॉन्स्ट्रेट अ प्रोफेशनल ॲटिट्यूड. मुलांनी त्याच्या इंटर्नशिपच्या ठिकाणी जाताना they should demonstrate a professional attitude so that they create a good impression about the institute. As I repeatedly tell you, it is not only the student, but the student, the institute, and ultimately the university.
यू नो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ओरिएंटेशन। दिस ईयर व्हाट वी हैव डन इज, लेट मी शेयर विथ यू, me and the faculty members, the directors, we have conducted orientation program of our students before going for internship, कि आपने किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, आपको कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाउ यू शुड कम्युनिकेट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मैनर्स, एटिकेट्स, बेसिक थिंग्स भी हमने उसमें ये कवर किया। Now, guidelines for evaluation. Now, this is very important. Again, all things are important, but again, guideline, ultimately marks तो आने चाहिए। तो marks हम लोग किस तरह से करेंगे? Like for example, the guidelines, we said we have a process. I don't know how is the process at your end or your institutes, but हमारे यहाँ पे process है 40-60। यानी 40 होते हैं internship के internal marks और 60 होते हैं external marks. When I'm saying external, means somebody who is not from the institute recommends those marks for the students. Typically, it is expected from the industry or the establishment, the supervisor of the establishment. So, internal marks will be based on what? The attendance and the learning outcome. बेसिकली इंटरनल मार्क होगा अटेंडेंस के ऊपर और लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम कहाँ से आएगा? हमें पता चलेगा उसके रिपोर्ट के माध्यम से, कि वो बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, उसका इवैल्यूएशन हम लोग इंटरनली करेंगे थ्रू रिपोर्ट। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कैसे होगा? बेसिकली वो लड़के का या लड़की का, स्टूडेंट का कंडक्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट और द रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट सबमिटेड। So this has to be validated by the supervisor. Now let us look at the attendance will be documented. Attendance हमने बोला कि attendance किस तरह से document होगा, उसके बारे में भी हमने ये किया इसमें। तो इस तरह से हमने उसको ये किया। देन अटेंडेंस किस तरह से डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो बोला। लर्निंग आउटकम कैसे इवेल्युएट होना चाहिए उसके बारे में हमने इवेल्युएशन गाइडलाइन किया एनेक्सर सी में। फीडबैक कंडक्ट उसका किस तरह से इवेल्युएट होगा वो, बिकॉज फीडबैक कंडक्ट ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, तो वो सुपरवाइजर की तरफ से किस तरह से आएगा उसके बारे में भी हमने व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिफाइंड दैट इन द एनेक्सर डी। Then minimum attendance criteria as per the university norms will be mandatory. The student need to score minimum 40% of the marks, that is 16% in internal and 16% in external evaluation. In case of carry forward, the same will be permitted as per the prevailing university norms. The university incentive project work certificate will be issued by the mentor. Now this is again very important. Let me share with you. When I'm saying the mentor यानी institute itself can issue the certificate. Why I'm saying this? Because many times today, let me share with you, in KBC NMU, we will have at least 20 to 25,000. How much? 20 to 25,000 in Jalgaon, Dhulia and Nandurbar district alone. Students who will be going for internship once it starts for UG program, undergraduate program. When we did this for PG program last year, I think our enrollment was somewhere around 4,500. Now, when the doors become open from next year, you will have PG plus UG. And when I'm saying UG means all streams. So that number will be minimum 20 to 25,000 for KBC NMU. अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 20, if I'm not mistaken, 20 lakhs or so. Because पूरी महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या एटलीस्ट 4-5 lakhs if not 20. Now, yeah.
So, certificate to be issued by the establishment. Let me share with you because industry, especially industry में जब जाता है ना, if you go to any industry and if the students start going over there and they ask for certificates, so probably वो नहीं. Now the question may arise कि भाई, sir, the student has done in establishment, how the institute can issue the certificate? अभी इसके अंदर आप देखोगे तो Annexure D. Annexure D is filled by whom? Annexure D is filled by the supervisor. Supervisor यानी वो इंडस्ट्री का बंदा. अभी वो इंडस्ट्री का बंदा जब भरेगा तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उसने अटेंडेंस किया है, करेक्ट. फिर बाद में उसने कंडक्ट वो यानी कब से कब तक उसने इंटर्नशिप किया उधर. बेस्ड ऑन दैट, based on the final due diligences by the institute head may issue the internship completion certificate, and that is the reason why we said it will be done by the institute. Timelines, we said the internship project work of PG students will be of not less than 4 credits. I think by now you must be knowing that each semester we have minimum 22 credits for each semester, and the internship would consist of minimum not less than 4 credits. So these were the guidelines that we had prepared. Again, जब शुरुआत थी हमारी यानी 2 साल पहले, ये 1-1.5 साल पहले जो हमने किया, तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंटर्नशिप को कंफ्यूज किया जाता था प्रोजेक्ट वर्क के साथ. प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क. क्या हो जाता है कि सब लोग बोलते हैं अरे वो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क. तो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क वी क्लेरिफाइड थ्रू द फुट नोट दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क डज नॉट मीन ये. आपले प्रश्न आपले विज्ञान स्कीम यहाँ पे भी मेंशन है, दिया है. आपले प्रश्न आपले विज्ञान के माध्यम से भी हमने ये किया. सो आई थिंक दिस इज अ 1 page. Quickly, what I will do is to make it easy. I understand that many of you will be coming from or will be having in, जैसे अभी मैं गढ़चिरौली में जाके अगर ये इंग्लिश गाइडलाइन दूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. या फिर मेरे नंदुरबार में जाके मैं अगर कोई ट्राइबल बेल्ट में जाके अगर कॉलेज में अगर इंग्लिश में बात करूंगा तो जमेगा क्या? तो नहीं जमेगा. तो उसके लिए हमने क्या किया, ये गाइडलाइंस को हमने इसके अपने लोकल यानी मराठी में भी उसको ट्रांसलेट किया है. तो यू कैन सी हियर दिस मराठी में उस पूरे एसओपी को हमने ट्रांसलेट किया है. Admin person can just confirm to me if the Marathi translation is visible. Rafi sir? Or any of the participant can just type and mention in the chat. Okay, visible. Great. So this Marathi translation. हे बघा तेच गोष्ट आहे, त्याच सूचना आहेत. फक्त एवढंच आहे की मराठी असल्यामुळे ते 1 पानाच्या ऐवजी 1.5 पानावर गेलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये आम्ही त्या पूर्ण अनेक्झर सुद्धा ऍड केलेले आहे. So what I'm doing is I will share this with all of you, because as I said, whatever you can take, you take. Whatever you'd like to improve, you can improve. If you can do better than this, you please go ahead and do it. Here I am just sharing now. Give me some time. 1 second, just hold on.
This is the English version that I've shared. Sorry. So I have shared with you this English version as well as the Marathi version. Now let us move on to the annexures. Let us look at annexure 1, A. What are the annexures? जहां हमने देखा है annexure A. Yeah. So let us look at the annexures. Instead of making a PowerPoint presentation, I have one PowerPoint presentation also, but then I thought, this is more, yeah, because these are practical things that we have done. Is the Excel sheet annexure A visible? Somebody can just type and also let me know. That is fairly good enough. Okay. No, they are saying. I will try to, yeah. I'm sure now it is visible. Great. So here, if you see here in this annexure A, आता see कई बार क्या होता है मालूम है क्या? जो एक मिनट हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कई बार हर एक जन यानी डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं, तो उसमें कई सारी दिक्कत हो जाती है. मग आपल्याला डेटा कोलेक्ट नाही करतायत, कोणत्या फॅकल्टीची किती आहे, आणि तो खरंच तो विद्यार्थी आहे का, कोणत्या वर्षाचा आहे, आणि थिंग्स लाईक दॅट. सो व्हॉट वी हॅव डन इज, आम्ही सिम्पल केलं त्याला की बाबा तुला काय इन्फॉर्मेशनची द्यायची ती द्या, पण ही इन्फॉर्मेशन बेसिकली असली पाहिजे. आणि सेकंड थिंग व्हॉट हॅपन्स इज कोणी मराठीत टाईप करतं, कोणी इंग्लिशीत टाईप करतं, तर ते पण एकदम बरेचदा प्रॉब्लेम होतो. पण बहुतांश वेळा आपण इंग्लिशमध्ये टाईप केलं तर आपल्या सगळ्यांना ते कॉमनली म्हणजे ते कॅरेक्टर्स बरेचदा ते फॉन्ट नसले तर ते प्रॉब्लेम होतो. त्याच्यामुळे आम्ही काय म्हणलं याच्यात, इफ यू सी इयर की व्हॉट वी हॅव सेड इज केबीसी एनएमयू इंटर्नशिप ओजीडी प्रोजेक्ट वर्क डेटाबेस एक्सेल फाईल to be filled by the internship nodal officer of the college or the campus in English only. असं आम्ही ते आधीच त्याला अनाउन्स. So here if you see what we have done is we have taken first thing is ठीक आहे academic year स्टुडंट PRN म्हणजे परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर विद्यापीठाचे दिलेला एबीसीडी आयडी एबीसी आयडी जर त्याची असेल तर ती असायलाच पाहिजे. आता आता कोणी असं म्हणणार नाही की एबीसी आयडी नाही आहे, कारण एबीसी आयडी ते आता ते बेसिक आहे. त्याच्यावरती एबीसी आयडी पण त्याची कॅप्चर करायची. सीट नंबर तुम्ही करा नाही तर नका करू, ठीक आहे सीट, कारण ते एबीसी आयडी वरनं सगळं मिळतं तुम्हाला. मग
एबीसी आय डी आणि विद्यापीठाचा PRN नंबर. पण ठीक आहे, सीट नंबर. नेम ऑफ द स्टुडंट, जेंडर म्हणजे मेल फिमेल. उद्या तुम्हाला तर शासनाला रिपोर्ट द्यायचा की मेल किती होते, फिमेल किती होते, कोणची मुलं कुठे गेले, कोणत्या पर्टिक्युलर इस्टॅब्लिशमेंटला मेल गेले का फिमेल गेले, काइंड ऑफ अनालिसिस यू कॅन डू. प्रोग्राम कोणता होता, UG प्रोग्राम होता का PG प्रोग्राम होता, कोणत्या फॅकल्टीचे होते, जसं आर्ट्सचे होते, कॉमर्सचे होते, सायन्सचे होते, त्यातले विषय कोणते होते, सेमिस्टर कोणत्या सेमिस्टरचे होते. PG असल्यामुळे आमचं सेकंड सेमिस्टरच्या PG मध्ये होत आहे. स्टुडंटचा मोबाईल नंबर काय आहे, स्टुडंटचा ईमेल ID काय आहे, कॉलेजचा कोड काय आहे. कॉलेजचा कोड म्हणजे युनिव्हर्सिटीने दिलेला. काय होतं की युनिव्हर्सिटी गिव्स द कॉलेज कोड टू द युनिव्हर्सिटी. आता फॉर एक्झाम्पल मेनी a time they write about the संस्था, they write in short, they write some spelling mistakes. तर कोड असेल तर काय होतं की when we have the code, it is easier for us to generate reports. मग नेम ऑफ द अफिलिएटेड कॉलेज, नेम ऑफ द कोणत्या जिल्ह्यात आहे, आमच्या जळगाव, धुळे, नंदुरबार कुठे आहे. मग नेम ऑफ द मेंटर, मेंटरचं नाव काय आहे, तर मेंटरचा मोबाईल नंबर काय आहे, मेंटरचा ईमेल ID काय. मेंटर इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट. लाईक फॉर एक्झाम्पल इन आवर कॅम्पस स्कूल, द मेंटर फ्रॉम बायोटेक्नॉलॉजी विल बी फ्रॉम लाईफ सायन्सेस, द मेंटर फॉर कॉमर्स विल बी फ्रॉम कॉमर्स स्कूल. इंटर्नशिप OJT मग हा इंटर्नशिपला कुठे गेला, त्याच्या ऑर्गनायझेशनला कुठे गेला, त्याचं टायटल काय होतं, तो केव्हापासून केव्हापर्यंत गेला, यानी फ्रॉम टू, उसका स्टार्ट डेट एंड डेट. नेम ऑफ द इंटर्नशिप सुपरवाइजर, ये इंटर्नशिप सुपरवाइजर कहाँ से होता है, द इंटर्नशिप सुपरवाइजर इज फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट. द इंटर्नशिप सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर अगर मिला तो, ईमेल ID. देन नेम ऑफ द इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर, ये थोड़ा सा हमने आगे, नेम ऑफ द TPO, हम लोग इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल का नाम, ये वो सब. बेसिकली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. So this you may not required for you, but still we had kept it because for us. Anything which you feel is missed out in this, you can type it in the box, because when one head is thinking and maybe when 80 plus heads are thinking, so definitely there is a more input we can get. We are having total 85 people over here. Any input would you like to give uh, on the database? Any addition required? I think this is fairly good enough. I'm sharing the NHS also, because when I'm sharing the policy, I'm also sharing the NHS. The only purpose is that we should be spreading this. We should be trying to make use of this, because as we go towards the maturity, more and more, it should be like a nuclear reaction. When I'm saying nuclear reaction, आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी नीचे जो इस प्रोग्राम में नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए. और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, इस सेशन होने के बाद, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होने के बाद, या आपके कोई जिनके साथ आप शेयर करते उनको अगर कोई सवाल हो, तो आप हमें फोन कर सकते हैं. You can call us anytime. We'll be sharing all our details with you. So let's take the A. So this was the integer which I had shared with you. One second, just hold on. Yeah, stop sharing हो गया. I'm just sharing. Give me 2 minutes.
Okay, somebody is asking for email address, not an issue. This I was going to give in the end, but since somebody has requested, so I've shared my email ID and everything. Okay. So now coming back, let us go to Annexure. Annexure B. Is Annexure B visible? Which is for the student. Is it visible? Please let me know. You can just type it out. Okay. Somebody is saying no, 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 no. Okay, I will again, try to. Is it visible? No, sir. No. No, sir. Wait. 1 second. I just. अभी देखिए Annexure B. Just let me. Okay, just hold on. I'm just trying to. Yeah, I'll just close some other files. Maybe it is causing trouble. अभी देखिए दिख रहा है Annexure B. No, sir. I'm wondering. सर उसको डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा सर. अच्छा, admin, can I share with you so that you can open it for everyone? सर त्याला डबल क्लिक करा प्लीज. डबल क्लिक कशावर करायचंय? त्याच्यात ज्या 02 च्या दाखवता ना तुम्ही, फाईल वरती तर केलंय. नाहीच. एक नाही तर मग सर स्क्रीन परत स्टॉप करा, परत शेअर करा स्क्रीन.
दिसत नाही सर. तुमचा माईक म्यूट आहे सर. तुमचा माईक अनम्यूट करा सर प्लीज. केला आताही दिसत नाहीये. नाही सर, त्याच्यावर सर लाईट काय करा, ती जी फाईल आहे त्याची फक्त क्लिक करा, राईट क्लिक करून ओपन करा सर. अच्छा एक मिनिट हा. मी आता शेअर बी करतोय. हा, त्या डबल क्लिक करा सर त्याच्यावरतीच. वरचे हे हा, याच्यावर ओपन ना. करा सर. येस, ओपन करा सर. अच्छा यू आर सीइंग व्हॉट आय एम डुईंग. येस. दिसतंय. यू कॅन सी माय फोल्डर ना. येस सर. हा आता ह्या फोल्डर मधले एनेजर बी जो आहे ना, हा एनेजर बी मी आता राईट क्लिक करतो, ओपन विथ. तरी ओपन करा सर, क्लिक करून तरी ओपन करा सर. ओपन केला काय ओपन झालंय दिसतंय. बरं ठीक आहे. अजून एक आयडिया करता येईल. एकच मिनिट. आता दिसते का. हा, येस सर. दिस इज. गुड. आता दिसत. ठीक आहे. जस्ट क्लोज माय स्क्रीन. So if you see, this is annexure B. Now annexure B is मुलाचा attendance. So what we have done is, याच्यात आम्ही वरती तुम्ही जर पाहिलं तर हे annexure B मध्ये we have said attendance during the project. याच्यात पहा तुम्ही पहिलं. What we have taken, name of the organization, name of the student, again PRN number हे ते. आणि हे कोणी भरायचं आहे, विद्यार्थ्यांनी भरायचं आहे. कारण काय एका विद्यार्थ्याला स्वतःची माहिती कधी भरू शकतो. जर टीपीओला सांगितलं तर ते चुका होऊ शकतात किंवा मग इतक्या लोकांचे नाही भरू शकत, प्रॅक्टिकली नाही पॉसिबल. तर ही माहिती त्यांनी भरायची आहे. आपण खाली घेऊया. आता मी काय केलंय, दिस फॉर्मॅट इज कॉमन. म्हणजे सेक्शन वन हा मी युनिफॉर्म ठेवलाय एनेक्झर बी, सी आणि डी साठी. जेणेकरून काय होतं की त्या मेंटरला किंवा सुपरवायझरला त्रास नाही होणार, कारण ते विद्यार्थ्यांनी भरून त्याच्याकडे द्यायचं आहे. आता लेट अस कम टू अटेंडन्स. आता ह्या अटेंडन्स मध्ये सॉरी हा एक मिनिट हा कशाचा होता एनेजर. हा एनेजर बी अटेंडन्स ड्युरिंग द फीडबॅक. अटेंडन्स आणि फीडबॅक याच्यात दोन गोष्टी कव्हर आहेत, एक अटेंडन्स आणि दुसरं फीडबॅक. The attendance, if you see, because see last year we were also not clear. Somebody said we'll give more. आम्ही म्हणलं मिनिमम 4 वीक्स तर तुम्हाला द्यायची आहे. म्हणजे ह्या विकली बेसिसवर तो त्याचा अटेंडन्स त्याच्यात टाकेल. आणि दुसरा जो सेक्शन होता त्यातला, दॅट वॉज ऑन द फीडबॅक. हा
या सेक्शन मध्ये काय केलं की त्याला म्हणजे स्टुडंटचा फीडबॅक की दिस प्रोग्राम हेल्प मी, त्याला काय शिकायला मिळालं, गेव मी अन अपॉर्च्युनिटी, इंटरपर्सनल, हे ते सगळं असे जवळपास 8 ॲट्रिब्यूट्स आम्ही घेतले. आता हे 8 ॲट्रिब्यूट्स हे आमच्या मनाने घेतले का आम्ही? तर नाही. एक मिनिट. हे 8 ॲट्रिब्यूट्स जे आहेत, इथं जे 8 ॲट्रिब्यूट्स लिहिलेले आहेत, विजिबल आहे ना सगळ्यांना स्क्रीन? 8 ॲट्रिब्यूट्स दिसत आहेत ना? एव्हरीबडी इज एबल टू सी द ॲट्रिब्यूट्स? गुड. अबे these attributes we have not done. I will, interesting thing I will tell you. Means, interesting thing I'll tell you. We went to the, if you see, I will open the government GR. Give me just 2 minutes. It is a very big document. सगळ्यांना दिसतंय स्क्रीन? Okay, good. Now, if you see this 94 page, कितना? 94 page का guideline है. In that 94 page guideline, this is the student feedback. Now, student feedback, if you see, it starts from here 1, 2, 3, 4, 5. Then again, another 7, 8 over here. Then again on the third page. That means 10-15 त्यांनी हे दिले होते. तर आम्ही काय केलं की we read all this and we converted it into a, like for example, I'll share with you. This is how we have done.
So yes, again, actually, I was just trying to open in the Excel file and show you. So what we did is all these 10, 15, which were attributes which were there. So what we did, we tried to convert it into a more simplified thing for our people, because otherwise what will happen is people will not go through and this will create a issue. Then we also kept some open-ended things. We also kept some open-ended, like, for example, open-ended questions. How did you feel? What were the, what did you dislike? Whatever suggestions and other thing. And we have also done the analysis of this. And, then we converted this into open-ended questions also. Now let us look at Annexure C. This is Annexure C for mentor. Is Annexure C visible? Just for the sake of, Okay, great. Thank you. So Annexure C काय केली आम्ही? Annexure C आहे तर तुम्ही याच्यात पाहिलं Section 1 is to be filled by the student only. म्हणजे ते काय होतं, लिहायचं काम तुमच्या सुपरवायझरला म्हणा किंवा मेंटरला. So because they'll be having hundreds of students. So he has to write. Now here we'll come to the learning outcome. This is to be done by the mentor. The quality and effectiveness of presentation. Here are 5 attributes. Now when we are arriving at these 5 attributes, let me share with you. If you read, it's because there is paucity of time, but if you read the 94 pages guideline, you will see that the attributes यहाँ पे हमने 5 दिए हैं, but वहाँ पे शायद 12 से 15 होंगे या 17 भी होंगे. So what we did is we have read them and we have clubbed them into one sentences, and that is how we have done the. Yeah. Now this learning outcome to be done by the mentor. Then similarly we'll come to Annexure D. Now this Annexure D is to be done by the Annexure D is visible. Somebody can just prompt Annexure D. Okay, good. So Annexure D also what we have done is, if you see here, Annexure D also in section 1 we have kept it common, and then section 2 we have said about the external assessment of the student. Now here we have given some 5 attributes. We have kept it limited to 5, but these are not just 5, because if you see again, read those guidelines, 94 pages. So you will have that this is a summary of different guidelines. Like for example, here when we say the boy is self-reliant, performance, dependable manner, त्यांनी काय केलं, डिपेंडेबिलिटीसाठी वेगळं आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी वेगळं आहे, शोज इनिशिएटिव्हसाठी वेगळं आहे, learns quickly. आता what we have done is we have clubbed them into one, and then this is how we have worked it out. So these are again done into 5 attributes. And here what we have done is the internship supervisor. See, remember one thing, when the boy or the student goes to the establishment is not just having one student, they'll be having hundreds of students. And second thing, year on year, every year they are going to have. Because ये एक बार ये चक्र जब चालू हो जाएगा, यानी अगले साल जब यूजी के बच्चे आएंगे, यानी महाराष्ट्र में अगर मैं बोल रहा हूँ 4-5 लाख, कि मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर 20,000 है, तो ये 20,000 एवरी ईयर आने वाले हैं, प्लस 4,000 यानी 25,000 लड़के हमारे यूजी के 20 और पीजी के 4,000 4,500, यानी करीब 25,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम दुले जलगांव एंड नंदुरबार इटसेल्फ. Now every year when they start going, these officers and managers of the establishment cannot really write reports for us. What we have to give them an easy task of tick mark.
तो ये फॉर्म में क्या है, हर लड़के के लिए उनको सिर्फ टिक मार्क करना है. So they have to what, just put the clear tick mark. That is what, close-ended questions for them. और उसके लिए भी हमने मार्क्स यहाँ पे डिफाइन किए, 0 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क, 8 मार्क्स. And so out of 40, he'll come to know that how much marks he has scored. For overall project, how the overall project was done, उसके लिए 20 marks दिए. Now in 20 marks, if you see, here we have given the scale. Like for example, if it is unsatisfactory, below 8, satisfactory 8 to 10, good 11 to 10, 13, very good 14 to 16 marks, excellent 17 to 20 marks. What we have said is, important note, the feedback of the internship, because यहाँ पे range क्यों दिया है, so that when the boy submits the report, the project report, the internal team can consider the marks either in a 17 or 20, either to take 17 or either to take 20 or 18 or 19. That the internal supervisor will decide when the boy submits the report. Because practically the boy will not be able to submit the report when he is actually doing the project, the internship, because only when he comes back from the internship, he will take about a week or 10 days time, and by that time the industry, he has already left the industry or the establishment. So it will be difficult, but the establishment छोड़ते टाइम उसने ये फॉर्म भर के लेना है. अभी इसमें क्या हो गया, रेंज आ गया. So the mentor gets a range कि within this range he can consider the marks. Fine. So this is how we have done it, simplified way. Then another thing, Abhi, now let's come to the last thing, that is the certificate. Now somebody can prompt to me whether the certificate is visible. Somebody can please say. Okay, great. Great. Now, tell me one thing, 25,000 students from Jalgaon, Tulya, Nandurbar, then you will be having another 1,000. Maharashtra में लाखों student होंगे. Establishment ये सब certificate बनाने में उनका समय नहीं खर्च करेगा. जो करता है अच्छा है, उनसे ले लो. The establishment which are giving you, helping you, please do that. But in case उन्होंने नहीं दिया, so what we have said, draft of the certificate to be issued to the student, name and address of the affiliated college or the campus schools. यानी ये प्रिंसिपल जब इशू कर रहा है तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से इशू कर रहा है. बिकॉज सी, टीचिंग इज आवर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम हमें तो हम कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट कंपनी नहीं करेगी. So here we have set certificate number, date. This is to certify that the student, name of the student, KBC NMU PRN number, ABCD ID, यानी उसका ABC ID, pursuing name of the course, यानी BSc, BCom, whatever BA, semester number so and so, has successfully completed. इसमें भी उनको tick mark दिया है. Internship, on-job training, project work, whatever you want to take. Having dash number of credits at dash, the name of the establishment. किसी ने तहसील ऑफिस में किया है, किसी ने जॉनसन एंड जॉनसन में किया है, somebody has done in maybe endurance, somebody has done in some bank, so they can write that from date to date. अभी who are signing this? This is signed by the mentor. अभी mentor is supposed to guide the student, so he is certifying that. This is to be signed by the TPO because TPO is maintaining the record. TPO की जगह पे आप INO कर सकते हो, internship nodal officer. And this is to be signed by the director or the principal. डायरेक्टर हमारे जो कैंपस स्कूल होगा तो उसका डायरेक्टर होगा, एक स्कूल. एंड सिंस इट इज फ्रॉम द इशूड बाय द कॉलेज, सो एक तरफ कॉलेज का लोगो, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का लोगो. दिस ऑल्सो व्हाट वी हैव सेड, यहां पे हमने नीचे नोट दिया है, द अबव इज अ सजेस्टेड फॉर्मेट.
If any institute, school would like to modify, add more information, they can do so by ensuring that minimum information is present. Now, what is that minimum information? Like for example, certificate number, date, name of the student, university का PRN, ABCD ID, course, semester, credits. ये तो बेसिक नीड है ना, कब से कब तक किया. तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया. सो डू यू फाइंड नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड इसको हमने मराठी में भी कन्वर्ट किया. यानी आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द मराठी. इफ यू सी हियर, is the Marathi version Annexure B visible? Somebody can prompt me. ग्रेट. म्हणजे भाषेची अडचण राहणार नाही. मराठीती केलं आणि इंग्रजीमध्ये पण केलं. तुम्हाला जे वापरायचं ते वापरा. इन्फॉर्मेशन सारखीच आहे. पण एक्सेल मध्ये टाकताना मात्र प्लीज इंग्लिश मध्ये टाका, बिकॉज ते एक्सेल मध्ये नाही तर खूप प्रॉब्लेम होतो पुढे अनालिसिसला. हे बघा सगळं तेच आहे. मराठीमध्ये एनेक्झर ए, बी आणि एनेक्झर ए सी, क. हे गुण. आणि सगळ्यात शेवटी सर्टिफिकेट मात्र इंग्रजीत ठेवलंय, याला नाही कन्वर्ट केलं. पण त्यात सूचना मात्र मराठीत लिहिल्या आहेत त्याच्यात. इज दिस हेल्पफुल? सिम्प्लिफाईड? बेटर देन 94 पेजेस? So now I'll be sharing you the annexures. Till now, I think I have shared with you. After understanding this, मैंने राफी सर को बोला था कि जो मांगेगा उनको दो, but now I am sharing with every one of you because I wanted that urge to be. It should be a pull factor, not a push factor. So friends, I have shared all the annexes with all of you, and you know the annexes in English, and the Marathi version that I have shared with you has the Marathi version, the file that I had shared with you, उसी के अंदर में पूरे एनेक्झर्स है. मराठी एसओपी मध्ये सगळे एनेक्झर्स आहेत. तरी पण परत एकदा मराठी वर्जन मी टाकून देतो. इट इज इन वन फाइल इटसेल्फ, ऑल द एनेक्झर्स. Fine. So I think I deserve one 5 or 10 minutes break. Who is the admin? राफी सर है लाइन पे? Any admin is there? So because I have been continuously almost since 2:30, it's been 2 hours now. I have been talking to all of you. So I think I deserve a break of 10 minutes for me. Yes, sir. I'll take a 10 minutes break, sir. Yes, sir. And then back to you. Thank you. Yes, okay, sir.
Yeah, so we are back to the session. So now I will quickly take you through a small presentation on competency is one of my pet subject, developing the skills and competencies. So any of the participant can just confirm to me if my screen is visible. Yes, sir. Okay, good. So you can see the PPT. Yes, sir. Okay, good. So after going through the internship, so basically, I just wanted to, from my industry experience also, I had made some, a presentation. So I'll be presenting you on that. See, how skills and competencies development we are talking about under NEP 2020. How it is the need of the hour. ये समय की नजाकत क्यों है? For if you look at you know in my presentation, what I've done is I've quickly, covered internet, what is the current market scenario, then what is the competence and how do we develop the competence, and NEP 2020 क्या है internship का. So introduction. So let's look at how is the business scenario. If you see here, 1980s. Can anyone comment how the market is? Anyone can type, maybe. If you see here, how many buyers are there? You can type just the number. How many buyers are there? Buyers कितने हैं नंबर में? 2. और seller कितने हैं? Seller 1. यानी buyers are many, but sellers are 1. I will share an experience with you. We got the delivery of our Priya scooter. My father had booked a Priya scooter and we got the delivery in 1980s. 1980 या 81 में हमारे को वो पहली प्रिया स्कूटर मिली. That Priya scooter my father had booked 5 years before. यानी with the waiting period was how much? 5 years. And probably the younger professors or teachers will not understand, but we have seen all the transition phase. After we got the scooter, the on, यानी वो नंबर सिर्फ दूसरे को देना है, तो उसको 5,000 रुपया ऑन था उस टाइम पे. So that was the situation in the market. That means buyers were many, but sellers were few. One more example I'll share with you. I think 1980s or 81 only, we were constructing our house. Cement, I went to the Tahsil office, to the Tahsildar, and there was a quota which was allocated to us. Cement was used only for the plaster because we were using the mud and other thing was used for building the house. Then cement was used for plastering. So cement was also limited. आणि सिमेंट मिळण्याकरता तहसीलदारकडे जाऊन तो हे करावं लागलं. अर्ज करून मग तो तहसीलदार कोटा द्यायचा. 5 गुणी 10 गुणी जे काय असेल ते. What I'm trying to tell you is that it was a more of a seller driven economy. तो उसी तरह से फिर बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा चेंज हो गया 1990s. अभी यहाँ पे आपको से बायर कितने दिख रहे हैं और सेलर कितने दिख रहे हैं? हाउ मेनी बायर्स आर देयर? Somebody can type so that I know that you are attending. 2. And how many sellers?
So how many sellers are there? 6. So buyers are few and sellers are more. ये बदलाव क्यों हुआ? Because of LPG, liberalization, privatization and globalization. Thanks to लेट श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वो दरवाजे खोल दिए ग्लोबल मार्केट के लिए। क्योंकि जब तक क्या था कि 1990s तक लाइसेंस राज था, जिसके पास लाइसेंस है वही ये एजेंसी लेगा, वही ये दुकान चलाएगा। तो लाइसेंस राज खत्म करके उन्होंने ओपन इकोनॉमी की और बाहर के भी काफी सारे इन्वेस्टर्स फिर इंडिया में आने लगे और कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने से क्या हो गया? सेलर्स ज्यादा हो गए और सेलर्स ज्यादा होने के बाद वो तो सेलर्स कंपटीशन से क्या हो गया? स्कीम्स आने लगी, कस्टमर्स का अल्टीमेटली एंड कस्टमर्स का फायदा होने लगा। आज अगर हमें गाड़ी लेनी है तो आपको मालूम है कई सारे लोग अपने पीछे लग जाते हैं। अभी इसके बाद क्या हो रहा है? 2000 और बाद में का मार्केट कैसा है? अनसर्टनिटी इज द ओनली सर्टनिटी। 1995-96 के दशक में पेजर्स थे। शायद आज काफी यंगस्टर्स को पेजर्स क्या है ये पता नहीं रहेगा। 1996 में जब पहले टाइम मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो बड़ा सा हैंडसेट आता था, इनकमिंग कॉल के लिए 16 रुपया पर मिनट। उस जमाने के 16 रुपए यानी आज के वो 50 रुपए हो गए समझो, पर मिनट लगते थे। तो क्या हो गया? वो मार्केट पूरा खत्म हो गया। अनसर्टनिटी इज द ओनली सर्टनिटी प्रॉब्ली इन टूडेज, मींस अनसर्टन है मार्केट। So market is changing like anything. Kodak was one of the global leader in camera business. Nikon, Kodak. आज कोडैक शायद नए बच्चों को पता भी नहीं रहेगा कि कोडैक क्या कंपनी थी। लेकिन पहले जो जमाने में कोडैक के सिवा दूसरा कैमरा नहीं आता था, यानी वर्ल्ड क्लास कैमरास। लाखों लोग उनके एम्प्लॉयज थे, पूरी फैक्ट्रीज बंद हो गई। यानी आज का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से, उनका बिजनेस पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बिकॉज उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। उन्होंने डिजिटल इसमें आए नहीं। दे कंटिन्यू टू रिमेन इन देयर ओल्ड प्रिंट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जैसा अभी यहाँ पे 1950s का मैंने जस्ट एक यहाँ पे लिख के रखा है कि 1950s and 70s doing business itself was a challenge. It was more of a license raj. Then industrial relations, union raj. आप अगर कोई पुरानी मूवी देखोगे राजेश खन्ना की या अमिताभ बच्चन की या फिर कोई भी, अगर पुरानी काफी सारी पिक्चर देखोगे आपको दिखेगा उसमें फैक्ट्री में तंटा हो रहा है, फैक्ट्री में मालिक और नौकर के बीच में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन आज शायद वह बदलाव आपको सोसाइटी में दिख रहा है। आपके आजू बाजू जो फैक्ट्रीज है वहां पे शायद उस तरह के धरना, उस तरह के जो ये होते थे वो शायद नहीं दिख रहे, बिकॉज अभी समय बदल गया है और समय के साथ काफी सारी अपने सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको, इट्स मोर ऑफ अ टैलेंट अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी, बच्चों की गिर रही है, और दूसरे तरफ हम लोग बोल रहे हैं, यानी हम लोग बोल रहे हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि कंपनीज जो है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बोले लोग नहीं मिल रहे हमें। When I was working in company, when I was working in a company, just give me a minute.
So, sorry. So talent means when I was working with organization, my owner used to be behind me, our MD, okay, sir, get us good people. And then people used to say, okay, I will first come, I will see the company, I will see the city, how there are schools, how there is social life. Now today I'm in Jalgaon. If Raymond's company is there in Jalgaon. Suppose the head of Raymond's, they want to make a big operations head, vice president level or senior vice president level or president level if they want to bring, I'm sure it is very challenging. Because Jalgaon में एक भी global mall नहीं है. तो वो जो सीनियर लोग आते हैं उनके लिए वो सब चैलेंजिंग हो जाता है कि उनको फैमिली लाइफ बिकॉज अल्टीमेटली दे विल बी कमिंग विद फैमिली सो दे लुक एट लाइक ऑल दीज फीचर्स आल्सो सो टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if the right talent is there, so there is a, like, there is a opportunity for them. Now, here what we are seeing is probably so every day it becomes that consistent improvement by understanding the opportunity is important. So we need to change. Probably we need to change in our field also. The fact that we know that the students are now going to already come with, already having knowledge. बिकॉज आज जो मेरे पास जो स्टूडेंट आने वाला है पढ़ने के लिए, मान लो टुमारो आई एम गोइंग टू टीच देम स्टैटिस्टिक्स, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टीच देम लेट अस से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बच्चा ऑलरेडी मेरे क्लासरूम में आने वाला लड़का ये गूगल पे शायद देख के आएगा. तो मैं उसको उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन कैसे बताऊंगा और किस तरह से मैं उसको समझाऊंगा, ये मेरे सामने चैलेंज रहने वाला है. सो मैं अगर वही पुराना अगर घिसा पिटा अगर वो एक बुक निकाल के अगर मैं उसी तरह से मैं लेक्चर लूंगा तो शायद मेरे क्लास में वो लड़का ठीक ढंग से बैठने वाला नहीं है. शायद वो क्लास मेरा अटेंड भी नहीं करेगा. तो बच्चों को पुल कैसे करना, हाउ डू वी मेक देम, ये आई नो इट इज चैलेंजिंग बट स्टिल probably we also need to change. Now new technologies are coming. PowerPoint presentation is there, Excel skill is there. And if I'm not comfortable with that, I may not be effective. When I'm talking to you, if I don't use the tools of, this Google Meet, if I don't use the tools of my presentation, my talk will not be effective. To make my talk effective, I need to use the modern tools and techniques which are available, and yeah. And that is how I should be able to align myself. So probably we need to also check that. That is why we said change. Probably change is the only constant. So if you look at this, what studies indicate? Studies indicate that low availability of talent as the biggest constraint for the growth of companies in India. 15 to 20% shortage of middle level managers. 2.2 million. Graduates every year, out of which only 15 to 20% are employable. Cream of the premier institute, MBAs are lured by the international companies. Because जो टैलेंट होता है वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उनको शायद लोकल इंस्टीट्यूट हायर भी नहीं कर पाते. तो लोकल इंडस्ट्री क्या देख रही है? लोकल इंडस्ट्री ये देख रही है कि भाई हमें कुछ उसमें से मिलेगा क्या, लोकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हमें कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे क्या. The recent study of the recent news of Times of India, this is I think just 6 months ago, 29th of October 2024, only 10% are expected to secure jobs.
म्हणजे फक्त 10% मुलांना जॉब्स मिळतील, बाकीचे 10-15% कदाचित थोडी मेहनत करायला लागेल. द हिंदू एक नामांकित पेपर, ती बातमी आहे जुलै 2024, म्हणजे साधारण 1 वर्ष व्हायचं अजून. इकॉनॉमिक सर्वे काय म्हणतोय की ओनली 50% ग्रॅज्युएट्स आर एम्प्लॉयबल. So these are the challenges. आता how do we overcome this? That means अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, आपल्या एज्युकेशन सिस्टम मध्ये बरेचसे बदलाव जे आहेत, मला वाटतं 1986 किंवा 88च्या दरम्यान, त्याच्यानंतर मेजर असे बदलाव झालेले नाही. मेजर आता हे बदलाव होऊ घातलेले NEP 2020च्या अंतर्गत. आणि आपण हे आहोत की आपण याचे सगळेजण साक्षीदार आहोत. म्हणजे वी हॅव गॉन थ्रू द अर्लियर education system, we are going through the new education system. We have to embrace it. We don't have a choice. आपल्याला याच्याबरोबर बदलाव आणावा लागणार आहे. मग फॉरवर्ड पाथ काय याच्यामध्ये? कॉम्पिटन्सी एक शब्द आहे. कॉम्पिटन्सी म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉलेज और स्किल्स, आय एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटन्सी. कॉम्पिटन्सीची मी थोडंसं त्याच्यात विषयाला धरून सांगतो की competence is nothing but an underlying behavior or characteristics of a person which helps him to deliver a superior performance. Means what you see is the skills and knowledge, but what lies below is the self-concept, attitude, traits and motives. हे आइसबर्ग मॉडेल जे आहे, जसं टायटॅनिक पिक्चर मध्ये दाखवलं होतं, आइसबर्ग मॉडेल सगळ्यांना माहिती आहे, हिमकाय पर्वत, त्याच्यासारखं असतंय. त्याला स्किल्स आणि नॉलेज नुसतं नाही, तर त्याचा ॲटिट्यूड कसा आहे, त्याचे मोटिव्स काय आहेत, त्याचं सेल्फ इस्टीम काय आहे, याच्यावर त्याचं भवितव्य ठरलेलं आहे. आणि ह्याच अनुषंगाने आपल्या ज्या NEP अंतर्गत जे होऊ घातलेले बदलाव आहेत, तर ते हे होत आहे की मुलांच्या स्किल्स आणि कॉम्पिटन्स कसं डेव्हलप करता येईल. आणि म्हणून हे इंटर्नशिप घालणं, म्हणून हे आपलं OJT, अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, ह्या सगळ्या गोष्टींचा याच्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. आपण जसं पाहतोय इंटर्नशिप OJT अंडर 2020, आपण थोडंसं वाचून घेऊया. द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 views that the purpose of education system is to develop good human beings. आणि म्हणून आपले जे कोर्सेस आहेत ना, आपले काय इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट प्लॅन वाले किंवा मग व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन सिस्टमचे व्हॅल्यू बेस्डचे कोर्सेस आपल्या याच्यात ऍड केलेले आहेत. काही आम्ही इकडे काही स्वामीनारायण विद्यापीठाबरोबर करार करून त्यांचे एक छान व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशनचे कोर्सेस आम्ही इकडं इंट्रोड्यूस केलेले आहेत मुलांसाठी. केपेबल ऑफ रॅशनल थॉट अँड ऍक्शन, पोझेसिंग कॉम्पॅशन, एम्पथी and courage and resilience, scientific temper and creative imagination with a sound ethical mornings and values. हे UGC गाईडलाईन्स प्रमाणे आहे. आणि ह्या UGCच्या गाईडलाईनच्याच बेसवर म्हणून मग त्याच्यामध्ये काय झालेलं, आंतरवासिता म्हणजे इंटर्नशिप जे इंट्रोड्यूस करण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही नंबरचा पॉईंट दिला तर त्यात पाहिलंय की कौशल्य वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं सक्षम होतील किंवा त्यांना याचा ओळख होईल, कामाची ओळख होईल व करिअरमध्ये त्यांना मदत होऊ शकेल. मुलांना सक्षम करणं हे आपलं म्हणजे ह्या मेनली NEP 2020चा भाग आहे.
Sorry. So this is what, the education policy is हे. आणि ह्याच अनुषंगाने आपल्याला आपल्या इथे म्हणजे इट्स नॉट जस्ट वी आर लिमिटिंग आवर सेल्फ. मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की एक स्टेप पुढे जाऊन आपण आता काय करतोय की एईडीपी अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम सुद्धा आपण इथं सुरू करत म्हणजे हे करत आहेत. मी आत्ताच रिसेंटली महाराष्ट्र शासनाचं काही सर्क्युलर आलेलं आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करेल याच्यानंतर. सो इन शॉर्ट याच्यामध्ये काय म्हणलंय मी, ह्युमन बिईंग्स आर लाईक टी बॅग्स. Human beings are like tea bags. You really don't know the strength until you get into the hot water. आणि putting them into the hot water, when I'm saying hot water means in the sense through internship, AEDP, तरच त्या मुलांची स्किल डेव्हलप होणार. Anyway, so we will just come to, I thought, I'll just show these small slides to you. One more thing about AEDP, I will take you through AEDP. So this is just for your म्हणजे हे तुमच्या तुम्ही हे मी तुमच्याशी शेअर करतो सर्क्युलर. जस्ट लेट मी नो, इज इट विजिबल? Okay, great. So this circular has recently come on the 22nd of April. This is for the apprentice embedded degree program. महाराष्ट्र शासनाचं सर्क्युलर आलेलं आहे. याच्यामध्ये त्यांनी गाईडलाईन दिलेल्या आहेत एईडीपी कसं इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. ह्या एईडीपीच्या तुम्ही आजचं सेशन एईडीपी वर नसल्यामुळे, बिकॉज एईडीपी हा पूर्ण वेगळा विषय आहे. एईडीपी वर नसल्यामुळे मी आज थोडक्यात तुम्हाला एईडीपीची माहिती देईल. अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम म्हणजे आता जसं आपण बीकॉम करतोय, आमच्याकडे एक BFSI नावाचा कोर्स आहे. BFSI म्हणजे बँकिंग, फायनान्स अँड इन्शुरन्स. बीकॉम म्हणजे BFSI, बँकिंग, फायनान्स अँड इन्शुरन्स सेक्टर. तर अशा नावाचा एक कोर्स आहे. आता मी रिसेंटली एक बीकॉम रिटेल मॅनेजमेंट सुरू करणार आहोत. मी जसं सांगितलं तुम्हाला, आमच्याकडे अजून एक आमचे जवळपास 4 कोर्सेस आहेत सध्या. अजून एक कोर्स आहे तो BA सिव्हिल सर्व्हिसेस. हा पण आपला अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम आहे. ढोबळ मनाने सांगतो तुम्हाला, अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्रामसाठी त्यांचे जे गाईडलाईन्स आहेत की फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी 1 सेमिस्टर किंवा जास्तीत जास्त 2 सेमिस्टर अशा ह्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यात अप्रेंटिस. तर आम्ही या मुलांना काय करतोय की पहिले 2 म्हणजे 3 वर्षाचा जो कोर्स आहे ते पहिले 2 वर्षामध्ये थिअरी नॉलेज, जे बेसिक फंडामेंटल नॉलेज असतं ते, प्लस काही सब्जेक्ट, जसं आता फॉर एक्झाम्पल रिटेल मॅनेजमेंटवरती आम्ही हा एईडीपी करत आहोत. तर रिटेल इंडस्ट्रीचे ज्या इनपुट्स आलेले आहेत तर ते इनपुटच्या आधारावर काही सब्जेक्ट्स थिअरी प्लॅन केलेली आहे. आणि त्यांचं जे 5वं आणि 6वं सेमिस्टर जे आहे हे त्यांचं त्या रिटेल इंडस्ट्री बरोबर हे होणार आहे. त्याच्या टायप आमचा होणार आहे. त्या टायपच्या करून त्यांनी त्यात जाऊन तिथं 1 वर्ष काम करायचं आहे. त्याच्यात तुम्हाला एक क्विकली थोडंसं सांगतो. एईडीपी सुरू करत असताना, लाईक वेन वी आर स्टार्टिंग इन एईडीपी, यू नीड टू हॅव अ प्रॉपर ट्रायपॅट्रिएट अग्रीमेंट. Tripartite agreement means you need to have a tripartite agreement between the university, industry, and the student. Where is the tripartite agreement? I am sharing with you
UGC has released these guidelines in 2025 on apprentice embedded degree program. How the apprentice embedded degree program should run. याच्याबद्दल बरेचसे गाईडलाईन त्यांनी इश्यू केलेले आहेत. ही आम्ही सगळं कोळून पिलेलो आहोत. म्हणजे याचं पूर्ण वाचून आम्ही सगळं त्याच्यातलं हे केलेलं आहे. तुम्हाला याच्यातले पण काही डाऊट आले तर तुम्ही मला विचारू शकता. फॉर द टाइम बिंग व्हॉट आय एम डुईंग इज आय एम शेअरिंग विथ यू the guidelines and the details so that at one place you'll have the document. Just give me some time. EDP. So basically what I've done is I've shared with you the AEDP guidelines by UGC plus the government, Maharashtra government चे GR, जे 2 GR आलेले आहेत 22 एप्रिलला. So those 22nd April GR also I have shared with you. Plus there is one more handbook of CRISP आणि there is a sector skill councilचा basically AEDP कसा implement करायचा तर त्याच्या संदर्भात पण आपले काही हे दिलेले आहेत. In fact, if you go to the Director of Higher Educationच्या वेबसाईटवर जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला ते सापडेल. त्यातले एक चांगले त्यांनी गाईडलाईन दिलेले मी डाउनलोड केलेत. 1-2 मिनिटं. लेट मी चेक AEDP सॅम्पल हँडबुक ऑफ NEP awareness See, AEDP, when you are implementing AEDP, basically you need to enter, as I said, first thing is you need to enter an agreement with a tripartite agreement between the university and the student and the establishment which is offering you the apprentice opportunity. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, good. But basically this draft I will not be able to share with you unfortunately because हा जो ड्राफ्ट आहे हा सध्या आमच्या अजून मॅनेजमेंट काउन्सिलला अप्रुव्हलला दिलेला आहे आम्ही. तर तुम्ही जर पाहिलं तर बेसिकली AEDP इम्प्लिमेंट करण्याकरता when you have to implement AEDP, so this memorandum, there is a tripartite agreement. This is as per the UGC guideline that you need to enter into with the, see, this is between 3 people. सी येल्लो जे मार्क केलेलं आहे ते इस्टॅब्लिशमेंट. जसं आता उद्या आम्ही कलेक्टर ऑफिस बरोबर करतोय तर कलेक्टर साहेबांचं तिथं नाव येईल म्हणजे जळगाव कलेक्टर ऑफिस. किंवा आम्ही रिटेल मॅनेजमेंट, what we are doing is we are entering an MOU with the retailers, like there are big retail chains in Jalgaon with whom we are entering into an MOU. Yesterday only we had a meeting with them, Professor Sardar and we all were there.
So their name will come over here. Second party to the MOU will be the Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University. And the third party to the MOU will be the student. The student will be the third party to the MOU. So अशा प्रकारे हे ट्रायपार्टी agreement. Now it is mandatory. See what is the difference between AEDP and what is the difference between AEDP and internship? I'll just quickly take you to, because you should not get confused with both of them. Just give me 2 minutes. Here. Yeah, is my screen visible to all of you? Is the screen visible, sir? Okay, great. So here what we are seeing is, if you see here, have a guideline. These guidelines, this CRISP guidelines I have already given you over the year. In that you will find this. See, AEDP is an apprentice embedded degree program, on the job training and internship. What is the difference between all of these? If you see here, stipend is mandatory. So because since the student is going to go for 1 year, stipend is mandatory by under AEDP. यानी जो बीकॉम, जो BFSI, बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट हमने जो कोर्स लगाया है उसके अंदर जो 1 साल बच्चे जाएंगे तो वहां पे उनको स्टाइपेंड देना मैंडेटरी हो गया है. तो दिस इज वन डिफरेंस. एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉन्गर वन कंप्लीट सेमेस्टर. यहाँ पे क्या होता है, 4 वीक्स टू 6 वीक्स नॉर्मली इंटर्नशिप का कार्यकाल होता है. नॉर्मली 4 वीक्स का इंटर्नशिप होती है, यानी 1 महीने की इंटर्नशिप होती है. यहाँ पे मोर ऑफ उसको काम करना पड़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यानी 1 साल उसने काम करना है अप्रेंटिस में. अभी स्टाइपेंड जो देना है, तो स्टाइपेंड के लिए क्या हो गया कि देयर इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड एज नैट्स, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो दिस नैट्स इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू बोट, that is Board of Apprentices Training. For example, KBC NMU is doing AEDP on retail management, and KBC NMU enters an agreement with the retail chain association, say Naujivan. So Naujivan will be mandatory for Naujivan to pay stipend as per Apprentices Act 1961. See, Apprentices Act 1961 में कुछ प्रोविजन के हिसाब से the current stipend rate is minimum 8,000 rupees for a sandwich degree program. Sandwich means the sense those who are not graduates but are undergoing final year of graduate. तो उनके लिए 8,000 रुपया है. And NAT scheme is also there for those who are pass out. Pass out अगर है तो उसके लिए 9,000 rupees है. Now, under this 8,000 rupees which has been defined, what NAT's government is going to do, government is going to give 4,000 rupees to the student. And Naujivan, who has entered a contract with us, or the collector office which has entered a contract, which is going to enter in a contract with us for our BA course, BA Civil Services course, they will have to pay 50%. And 50% will be borne by the NATs. And 50 NATS is nothing but National Apprentice Training Scheme. And 50% will be given by the establishment. तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपको इमीडिएटली इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं ये होगा, बट आई एम श्योर व्हेन यू गो थ्रू ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू विल बी गेटिंग एन इनसाइट इनटू इट. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट. तो उसी के आधार पे ये एमओयू हमने बनाया है. सो दिस एमओयू, लाइक फॉर एग्जांपल द सेकंड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी. So here, see the background of the MOU. We have said that these are the GRs. 22 तारीख का जो GR है. So this is the background, and then we have said, then of course there are different roles, responsibilities. It will be mandatory.
for them to give the this draft I will not be able to share with you. So this we have listed down like, what they will be doing, what they will not be doing. Here, if you see a NATS, if you see this, see 50% of the stipend will be shared by the government of India and 50% will be paid by the respective industry. And this is to be done through board. So the university also needs to enter an agreement with board to register the students. So this also we have done. So I'll just share with you. But this we have done, but this is under process. Now because it is being like we are having our management council meeting on 30th. So most probably it will be completed in that. This again I cannot share because this is again under process. It is yet to be approved. See, if this is an understanding between board, that is Board of Apprentices Training and KVC NMU. So under this, we'll have to form a facilitation center, registration के लिए ये वो. I am also sharing with you one more document, which probably you may find it useful. So one second, let me see. Fine, I think this is enough. So any questions? Let's keep this 10-15 minutes open for any questions, if any. Rafi sir, can we open the channel for question and answers? I'm meeting now. Yeah, any questions, sir? I've done with my coverage. So who's the admin person? Okay, great. I also enjoyed, but if any questions are there, please do let me know. We can have a separate session on EADP once we enter an MOU and when we go through the entire process. Interestingly, मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक और समय लेता हूँ. फीडबैक भी हमने लिया था. Just give me some time. I'll just show you how we have done the. हाँ, एक महत्वाची गोष्ट राहून गेली. One very important thing which I have missed. One important thing is on आपले प्रश्न आपले विज्ञान. आपले प्रश्न आपले विज्ञान. So I will just share with you 1 second. Just give me time. Is the screen visible? Yes, sir. Great. So this actually, I'm not going to conduct this session for you, but what I'm trying to tell you, see this session we did 1.5 years ago, like last year. मी जसं म्हणलं ना गडचिरोली, नंदुरबार त्या भागातमध्ये जे आहे तिथे इस्टॅब्लिशमेंट्स नाही आहेत. So what we did is we conducted internship through आपले प्रश्न आपले विज्ञान. So this is what we conducted several sessions for the faculty members.
Chirag Marathe is my very good friend and a very positive person. He is from IIT Bombay. This is nothing but the Unnat Maharashtra Abhiyan team. This is the UMA, that is Unnat Maharashtra Abhiyan team. So in this session, त्यांनी सगळं ते classes हे ते conduct तिथे केले. See here, if you see in this slide, you can see the students are given some projects and then they will work on that. So this gives them the practical experience also and throughout Maharashtra. What I will do is I would suggest if you want more information about this, so I can share this PPT also with you and I will share Chirag's number also with you. So that Chirag, you can contact Chirag and Chirag will also help you out. You tell him that I have given your number and Chirag will also be quite helpful. He's a very positive person. So here what we did is here we see. We also conducted several workshops and all for educating our staff on Aple Prashna, Aple Vinyan. So give me a minute. I will. Send with you Chirag Marathe's number also. You can get in touch with him and he will definitely help you out also. You can give him my reference. Especially the institutes which are in rural areas, जे remote areas मध्ये आहे, rural area मध्ये आहे, tribal area मध्ये आहे, किंवा ज्यांना दुसरी संधी मिळत नाहीये, खूप सारी मुलं आहेत, त्यांना कसं अकोमोडेट करायचं, ते आपले प्रश्न आपले विज्ञानच्या माध्यमातून आपण त्यात त्यांना अकोमोडेट करू शकतो. तर मला वाटतं this is also useful and very good and it is government scheme. So nobody will object to it. This is what it is. So with this, I think I've done with all my interactions with you people, and thank you very much. Thank you, Rafe sir, and the team of UGC. If anything is there, then definitely I'll be there because sharing is sharing increases. Because see, the benefit to me by delivering this session is I refresh my knowledge, because Aple Prashna, Aple Vinyan, which we have done 1.5 years ago, or whatever we have done earlier. So that helps. Yes, sir. So Rafi sir, I think we are done with my session. Thank you, sir. Yeah.
सर खूप छान सेशन झालं. थँक्यू मॅडम. ॲज आय त्याबद्दल हॅव आभार टाईप, होते सर. मी जसं लिहून दिलंय की द हा, हा. रिअल आउटकम विल बी लाईक when you actually start implementing and taking whatever you can practice out of it. आणि तुम्हाला जर काही अडचणी आल्या तर डेफिनेटली यू कॅन कॉल मी एनी टाइम येस अँड सर. आय विल बी देअर टू हेल्प यू आउट. मी एकच म्हणतो की आपण जे काही करतोय ते पॅशननी करावं. आणि डेफिनेटली आपण मुलांच्या बरोबर डील करतोय त्याच्यामुळे मग मुलांसाठी ठीक आहे. आता त्यातले मी असं म्हणत नाही की 100% मुलं सगळं हे करतील, पण कमी कमी जे घेऊन चालतायत ते दॅट 20% दॅट एम्प्लॉयबिलिटी हाऊ फ्रॉम 20 विल गो टू 30 विल गो टू 40 अँड 50. सर त्याच्याशिवाय ओजीटी बद्दल तर खूप काही GR आहेत, गाईडलाईन आहेत, पण आणखीन पण टीचरला पण कन्फ्युजन आहे आणि स्टुडंटला पण ते कन्फ्युजन असतंच ते ओजीटीचं. काल परवा पण एक सरांनी छान लेक्चर घेतला. त्याच्यामध्ये पण असंच की बाबा ओजीटी आपण जनरली NEP मध्ये आपण 3rd सेमिस्टर 4th सेमिस्टरला टाकलेलं आहे. तर ते त्यांना कन्फ्युजन असतं की बाबा हे सेमिस्टर बरोबर घ्यायचं का परीक्षा झाल्यानंतर घ्यायचं, असे बरेच कन्फ्युजन टीचरला पण आहेत, विद्यार्थ्यांना पण आहेत. आणि असे खूप क्लिअर काही गाईडलाईन असं कुठंच मेन्शन केलेलं नाही की बाबा ड्युरिंग सेमिस्टर घ्या किंवा जर लास्ट समजा 4 वर्षाचा कोर्स, 2 वर्षाचा कोर्स असेल, 3 वर्षाचा कोर्स असेल किंवा NEPचा 4 वर्षाचा कोर्स असेल तर तो ओजीटी ऍक्च्युली करायचा कधी? नाही, याच्यामध्ये आपल्याला जे हे आहे मागच्या इनफॅक्ट आमची ओजीटी कमिटीची पण जेव्हा मीटिंग झाली होती हा, तर हा, तेव्हा पण आम्ही मग तेव्हा ही चर्चा केली होती की आपल्याला त्यांना लोकांना काही फ्लेक्झिबिलिटी देता येईल का. हा, 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 कधी कधी काय होतात, काही जण म्हणतात की सर तो दररोज 2 तास जाईल, 3 तास जाईल हा, आणि हा, करेल. हा. तर ते ठीक आहे, पण ते कितपत इम्प्लिमेंट, बिकॉज काय होतं त्याचा मिसयूज मग जास्ती होऊन जातो. हो, हो, हो. म्हणजे मिसयूज म्हणजे मग मुलं काहीतरी थातुरमातुर सांगतील, कागदपत्र भरून घेऊन येतील. हा, 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 म्हणजे ते कागदोपत्री नको व्हायला. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं का, इन रिअल स्पिरिट ती व्हायला पाहिजे. हा. मी असं म्हणत नाही की 100% होईल, पण आपल्याला कमी कमी त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं फार आवश्यक आहे. अच्छा, अच्छा सर. हा, आणि आयडियली आम्ही काय केलं होतं की इथे मी तुम्हाला सांगतो, आमच्या विद्यापीठामध्ये म्हणजे जेव्हा PGला आम्ही जेव्हा इंटर्नशिप लावली, हा, हा, म्हणजे मागच्या वर्षी, तर आम्ही हा, ती सेमिस्टर झाल्यानंतर हा, हा, तिथून 1 महिना पकडलं. म्हणजे जर थेअरी पेपर संपले आपले असं काही जर 28-29 तारखेला, हा, तर पुढच्या लगेच 1 तारखेपासून 1 महिन्यात आम्ही त्यांना सगळ्यांना सांगितलं की इंटर्नशिप करायची आहे तुम्हाला. आणि याच्या व्यतिरिक्त आम्ही विद्यापीठाने काय केलं की इंटर्नशिप मध्ये मुलांना स्टायपंड हा राहायचा प्रश्न असतो, बिकॉज बरेचदा वेगवेगळ्या भागातून आलेले विद्यार्थी असतात. तर आम्ही विद्यापीठाच्या फंडांना आम्ही त्यांना 1,000 रुपये स्टायपंड सुद्धा दिलं. ऍक्च्युली सर प्लस मग त्यांना आपण प्लस आपण आपण एक्झाम नंतर जर ठेवलं ना सर त्यांचं हा मग हा पुन्हा तो विद्यापीठाचा नियम तुम्ही 40 दिवसात रिझल्ट लावा नाही आणि नाही नाही, हा. आता याच्यात कसं आहे मॅडम, तसं जर पाहिलं तर याच्यात ओजीटीचं जे आहे 1 महिन्यानंतर, हम्म, तर तेवढ्या विद्यार्थ्यांचं जे आहे ना, तर हम्म. ते आपल्याला आम्ही तेवढं अकोमोडेट केलं होतं सगळ्यांना. अच्छा, 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 आणि अच्छा. दुसरी गोष्ट काय झालं की तो असं काही फार याच्यात असं काही हे नाही ना, त्या मुलांनी जर रिपोर्ट केला हम्म. साधारण 5व्या आठवड्यात त्याचं कम्प्लीट व्हायला पाहिजे, तर हा, रिझल्ट सुद्धा बरोबर. मग वेळेत लागले तसे अच्छा, 40 अच्छा. दिवसाच्या आतमध्ये. हा, हा, हा. मला वाटतं रिसेंटली मी असं ऐकलंय मागच्या सेमिस्टरमध्ये काहीतरी मला वाटतं 20-25 दिवसातच रिझल्ट लागले होते. अच्छा, अच्छा सर. हा, म्हणजे तसं त्या मानाने फास्ट आहे जरा टीम. थँक्यू सर, थँक्यू. वेलकम. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, म्हणजे काही तुम्हाला चॅलेंजेस किंवा मग शंका कुशंका किंवा हे कसं काय कसं, तर मग तुम्ही काय हे कसं आम्ही सगळं खोळून पिलोय त्याच्यामुळे मग उत्तर देता येईल एवढं मी कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो तुम्हाला. मी अजून तुम्हाला रिपोर्ट्स ते दाखवले नाही, पण बरेचसे आम्ही ज्या स्कीम्स लॉन्च केल्या, रिपोर्ट्स केले, प्रत्यक्ष जाऊन प्रत्येक कलेक्टरला भेटलो आम्ही मागच्या वर्षी, म्हणजे इंटर्नशिपसाठी. आणि कलेक्टरनी, तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटेल, कलेक्टरनी आदेश काढले की यांच्या प्रोग्रामला अटेंड करा म्हणून त्यांच्या अधिकाऱ्यांना. आणि मागच्या वर्षी ते इलेक्शन होते. अच्छा, अच्छा. हा, म्हणजे ते थोडंसं आपल्याला पुश करावं लागतं ते. म्हणजे इन्स्टिट्यूटला जास्त मेहनत घ्यावी लागेल सर आपल्याला, म्हणजे नाही काय नाही, ते तर हे बघा मॅडम, कसं आहे माहिती का, कोर वर्क कोणाचं आहे, आपलं आहे. आपलंच आहे.
हा, त्यांच्यासाठी ते मी जसं म्हणलं, आता मी इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना बरेचसे मुलं यायचे, तर मग बऱ्याचशा मुलांचा काही काही ॲटिट्यूड हा असतो की नाही सर सर्टिफिकेट दे दो ना, हा, असतं असतं. सर्टिफिकेट देऊन मोकळं होऊन जायचं. आम्ही म्हणायचं जाऊ दे बा, त्यालाही गरज नाही. मग ते पण आम्ही सगळ्यांनाच द्यायचं असं नाही, एखाद दोन जणांचे असे फोन आले आणि खूपच जर प्रेशर आम्हाला वाटलं नाही बा द्यावं, तर देऊन टाकायचं. पण त्याच मुलांचं नुकसान होतं ना. नुकसान आहे, नुकसान. हा, हा, त्या मुलांनी ठरवायचं, त्या मुलांचं ओरिएंटेशन करणं फार आवश्यक आहे. आणि मी काय बरोबर. म्हणतो की आपल्या 50 मुलांपैकी आपल्या वर्गात 50 मुलं आहेत, ठीक आहे, सुरुवातीला 20 सिन्सिअर आहेत ना, आपण ते 20लाच धरून चालू आधी, त्यांच्यावर बरोबर. कॉन्सन्ट्रेट करू. हम्म. कारण कसं आहे, शेवटी जो जीता वही सिकंदर ना. बरोबर आहे, बरोबर. हा, आणि त्या मुलांना हळूहळू जाणीव होते. हा हा. थोडं सिम्प्लिफाईड केलं आम्ही गाईडलाईन्स, त्याच्यामुळे आम्हाला ते करता आलं इम्प्लिमेंट बऱ्यापैकी. मी इनफॅक्ट आता ओजीटीच्या कमिटीमध्ये पण हे सजेस्ट केलं होतं की सर थोडं सिम्प्लिफाईड करा, पण तिथं काय होतं मग टिपिकल ते शासकीय UGC कडनं असं आलेलं आहे, तर मग त्याच्यात तसंच ते खाली जातं. बरोबर आहे सर, मला लक्षात बरोबर. आलं का, तर त्याच्यावर तो 90 पेजेसचं कोणी वाचत नाही ना मॅडम. मग नाही 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 ना, प्रॅक्टिकल बरोबर. गोष्ट आहे ना. हम्म. आता त्याच्यात दिलेलं आहे की त्या सुपरवायझरनी हम्म. एस्टॅब्लिशमेंटच्या याच्या ठरवून दिलेल्या कामाचं रजिस्टर मेंटेन करावं. आता कोण करणार रजिस्टर मेंटेन इंडस्ट्री बदली? तर ते नाही होत ना ऍक्च्युली काही गोष्टी. म्हणजे बरोबर. ह्या, मग आपण काय करायचं, ज्या मस्ट गोष्टी आहेत, हम्म हम्म ज्या केल्याशिवाय भागणार नाही, अशा हम्म. गोष्टीवर आम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं. मग अच्छा अच्छा. त्या अनुषंगाने एबी आपले प्रश्न आपले विज्ञान हे एक चांगला अनुभव होता. अच्छा अच्छा. म्हणजे स्पेशली जे रुरल एरियामध्ये जे आहेत ना लोक, हम्म. त्यांच्यासाठी जे इन्स्टिट्यूट्स. त्याच्यानंतर आम्ही इंडस्ट्री मीट पण घेतली. इंडस्ट्री मीटला हे बरेचसे आपले सुकाणू समितीचे पण सदस्य ते होते. अच्छा इथे अच्छा. 15 मार्चला आम्ही इंडस्ट्री मीट घेतली. इंडस्ट्री मीट मध्ये असं सांगण्यात आलं की बाबा 25-30च्या वर येणार नाही, पण मला सांगायला आनंद वाटतो 75 लोक आले, अरे वा, छान. इंडस्ट्रियलिस्ट. म्हणजे इंडस्ट्री मीटचा जर रिपोर्ट पाहायचा असेल तर तुम्हाला मी एकच मिनिटं, कारण सिन्स हा विषय चालला म्हणजे काय असतं, पण ते आले म्हणजे कसे आले, त्यांच्या म्हणजे आम्ही गेलो तिथं, भेटलो, त्यांना पत्र दिले, प्लस फॉलोअप केले, फोन केले. ज्या दिवशी इंडस्ट्री मीट होती त्या दिवशी परत आठवण करून दिली. पण त्यांनाही वाटलं ना कुठेतरी, यार हे इतके लोक मेहनत करतात तर चला आपण जाऊया. म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं का, हा, आलं ना म्हणजे आपण सर. नुसतं परिपत्रक काढलं आणि ते येतील असं नाहीये. नाही, फॉलोअप महत्वाचा राहतो तिथे. हा, आणि ते पत्र म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, VC सरांच्या सहीनी प्रत्येकाला मी पत्र दिलं इंडिव्हिज्युअल. जसं आता फॉर एक्झाम्पल एखादा मॅनेजर असेल एखाद्या कंपनीचा, तर त्या मॅनेजरच्या VCच्या सहीनी इंडिव्हिज्युअल पत्र त्याला की अच्छा. डिअर मिस्टर, त्या हाताने लिहिलेलं, म्हणजे त्याचं नाव, हम्म. बाकी टेक्स्ट तो होता, आणि हम्म. VCची सही, आणि ते आल्यानंतर गेल्यानंतर परत त्यांना थँक्यू लेटर सुद्धा दिलं. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे हे जे पर्सनल टच आहे ना, तो हा डेव्हलप करणं आवश्यक होऊन जातं. नमस्कार सर. हा, नमस्कार मॅडम, बोला. सर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आपण काही स्किल म्हणा, काही उपाययोजना डेव्हलप करण्यासाठी काही मार्गदर्शन मी कराल आता जे का? मी आता जे म्हणत होतो ना मॅडम, आपले प्रश्न आपले विज्ञान. हा हा. तुम्ही काय करा, चिराग तुमच्या कोणत्या ठिकाणी आहे नेमकं? पाचोड सर. पैठण पाचोड. हा, हो, माहिती आहे छत्रपती. ना पाचोडचं. मी हा हा संभाजीनगरच आहे. पाचोड हे तर हा सगळं माहिती आहे. आता हा पाचोड सारख्या ठिकाणी मॅडम, तरी पाचोड एवढं ग्रामीण नाहीये. मी तर म्हणतो हा इव्हन हा आदिवासी भागामध्ये होऊ शकतं. तर हा पाचोडला तुम्ही काय करू शकता की, हे बघा, तिथे तुम्हाला मी सांगतो ST महामंडळाचं कार्यालय आहे. हा हा तर तुम्ही एसटी महामंडळाला अप्रोच होऊ शकता. दुसरी गोष्ट, तुमचे तहसील ऑफिसेस हे ते आहेत, तिथं काही कार्यालय जे असतील, हा. ग्रामीण कार्यालय किंवा इव्हन मेडिकल जे आहे त्यांचं, हो. तर त्यांना तुम्ही अप्रोच होऊन त्यांना हे करू शकता. ग्रामपंचायती आहेत, ग्रामपंचायतीला हे करू शकता तुम्ही. इव्हन खेड्यापाड्यांनी जे ग्रामपंचायती आहेत त्यांना सुद्धा तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह करू शकता इंटर्नशिपसाठी, याच्यासाठी. आणि याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे हे झाले इस्टॅब्लिशमेंट. हा हा याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला काय सजेस्ट करेल की, मी आता जे नंबर शेअर केलाय चिराग मराठेचा,
हो सर, ओके. डाऊन आणि केलं, नोट डाऊन. आणि प्रेझेंटेशन शेअर केलेलं आहे. तर तुम्ही चिरागला बोला, चिरागला सांगा माझं नाव की जळगाववरून आम्हाला जवळेकरांकडनं मिळालंय म्हणून. तर ते ओके. डेफिनेटली तुम्हाला मदत करेल. म्हणजे कसं आहे, पॉझिटिव्ह आपण जे म्हणतो ना, तर चिरागला म्हणजे कसं आहे, हे पॉझिटिव्ह लोक आहेत एकदम. तर म्हणजे तसं सर, म्हणतो आपण. हा, तिथे तिथं शेती व्यवसाय करणारे विद्यार्थी जास्त आहेत सर कॉलेजला आमच्या ना. तर हो, असं झालं. हा. तर त्यांना कसं आहे की हे बघा, एक लक्षात घ्या की आता फॉर एक्झाम्पल कोणत्या कोणत्या विद्याशाखेचे आहेत ते? विद्यार्थी सर आमच्याकडे तिन्ही पण आहेत. नाही नाही, हा म्हणजे आर्ट सायन्स कॉमर्सचे असतील, हा करेक्ट? हा हा. हा, तर त्यांना कसं आहे मॅडम, त्या त्या अनुषंगाने आपण तुम्ही त्यांना ते आपले प्रश्न आपले विज्ञानच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांना प्रोजेक्ट देऊ शकतो. फक्त एक काम करा, माझं सगळ्यांना कळकळीची विनंती अशी आहे की तुम्ही विद्यार्थ्यांची आधी मीटिंग घ्या आणि त्यांचं ओरिएंटेशन करा. हो सर. ओरिएंटेशन म्हणजे कसं आहे की बाबा तुम्हाला हे दिलेलं काम तुम्ही सिन्सिअरली करा बाबांनो. येस. कारण त्याच्यावर कसं आपण 24 तास थोडी लक्ष देणार आपण विद्यार्थ्यांवर. बरोबर. हा, आपण एवढं कळकळीचे प्रयत्न करतोय, तर आणि त्यातले जे चांगलं करतात त्यांच्यावर फोकस करा, म्हणजे ते अधिक चांगलं करतील आणि दुसऱ्यांना मग एक प्रेरणा होईल की बाबा चला आपल्याला काहीतरी करता येईल म्हणून. चालेल सर. ओके सर, थँक्यू. ओके. एक जस्ट एक सेकंडसाठी मी एक रिपोर्ट तुम्हाला दाखवतो, जो आता आम्ही हे केलेला आहे. एकच मिनिट. माझं स्क्रीन दिसतंय का सगळ्यांना? हॅलो? नाही सर, नाही, स्क्रीन नाही दिसत. नाही का? एकच मिनिट. आता दिसतंय का? दिसते सर, दिसते. हा, आता हा जर पाहिला ना मॅडम, हा रिपोर्ट मी जे म्हणलं ना इंडस्ट्री राऊंड टेबल कॉन्फरन्स, हा सर. आम्ही हा 12 तारखेला घेतला, 12 मार्च 2025, म्हणजे गेल्या एक दीड महिन्यापूर्वी. हे बघा, जे इंडस्ट्रीचे जे लोक आले ना मॅडम, येस सर, येस सर. हा 75 तुम्हाला दिसतात तिथे बघा, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीचे. हा सर, हा सर. केमिकलचे 15, पीव्हीसी प्लास्टिकचे 13, सर्व्हिस हे ते असं करून 75 लोक आले होते. आता या रिपोर्ट मध्ये पहा, त्याच्यामध्ये त्याच्यात त्यांची आम्ही म्हणजे मीटिंग मध्ये काय ठरलं, आमचं काय झालं, काय नाही, पोस्ट मीटिंग आम्ही काय केलं, आणि हे बघा मीटिंगचा हे टाइम टेबल कसा होता आमचा, अपूर्ण टाइम टेबल. येस सर. या टाइम टेबलच्या व्यतिरिक्त हे बघा लिस्ट, कोण कोण आले ते 75 लोक कोण, बघा यांची नावं, यांचं सेक्टर वाईज हे सगळे 75 लोकांची लिस्ट. याच्यातले काही डबल डबल आले होते, याच्यातले 62 पैकी. बघा हे इंडस्ट्रीचे जैन ग्रुपचे चेअरमन आले होते, अशोक भाऊ जैन. नंतर मग भरतदादा अमळकर होते. तर आमची हे सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत आणि त्यांचं असं आहे. आणि मग नंतर हे सगळं त्यांच्यावर आलेल्या बातम्या. तुम्ही करा सगळेजण, तुम्हाला काही जरी असेल अडचणी तर डेफिनेटली आपण एकमेकांच्या एक्सपिरियन्स मधनं शिकूया आणि बघूया काही हे असेल तर. आम्हाला मी फीडबॅक यासाठी मागत असतो का, मी यासाठी प्रश्न विचारा म्हणत असतो की त्यातनं मग आम्हाला पण ते इम्प्रुव्हमेंट करता येते काही जर असेल तर. चलो, थँक्यू व्हेरी मच. विल क्लोज नाव. मला थोडंसं जरा राफी सर.
वाटतं निघून गेलेले मॅडम? टेक्निकल आहेच त्यांचे को आहेत. हा, मग एक टेक्निकल एक त्यांना एक सांगा मग बंद करून घेऊ म्हणून. हा, एक सेकंद. गौरव सर वाट पाहतायत. हा सर लिव्ह करा म्हणतात, काय हरकत नाही मीटिंग. हा